Well, good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Every Monday is a mini New Year's Day where these teams come up here and claim victory. Let's see what is it going to be. But before that, I know you guys know this run. You guys have been here at the MOBA Warmup Clash right from the last few weeks. It's been, week 34 now, and it's crazy to see how the teams are coming up, and a lot of teams coming up. So they are already preparing for tournaments. They're already trying to get as much as victory onto the possible, which is a really great thing, because we just had Clash of Starlight, which had a team Ace Invoker as our winners, and then themselves right here did do the scrims as well. So let's see what is it going to be. First match is going to be Ace Invokers versus Team Arleng ML, who are victors for the style of Clash of Starlight versus Arleng ML, one of the teams that I really like to see. I'm your caster Peachy, and I will be joined by Asiya today. So hello Asiya, how are you doing? Hello Peachy, I'm doing great, and yeah, I hope everyone else on the chat too, everyone is doing great too. So once again, just like you mentioned, for week 34 we are back again for our scrims, and I know all of our viewers, if you are also interested, do come and join, do come and register, and there will be a link for our Discord server on the chat, so you can go ahead and join up, because the more teams we have, the more we love it, because we are also seeing new teams, seeing underdog teams come up, seeing them play, practice. That's what we want. But never mind, today's teams, just like Peachy mentioned, we have the victor of our previous tournament versus Team Arleng. Well, Team Arleng, I think they are new, so welcome to the scrims. I hope they have something good to show us. Let's see what is it going to be. They're right here. It's going to be a best of 3 series, while Team Arleng ML has the first ban and the first pick onto their hand. So let's see what they will be trying to go ahead. For Ace Invokers to know Arleng ML, they have to ban out the Mia, one of the key picks right here for Arleng ML. But for Ace Invokers, the respect ban goes quite a lot. So you can't be banning all those heroes. So let's see, Arleng ML, what your call gonna be. Hirara out of the way, Marcel, understandable. I do feel like we may be able to see the Belleric and the Atlas, which has been very common throughout this meta. Even the Eudora. She can also make her way up there, but yep, she is that scary right now. And the other contester which is coming up, that's definitely the Hanzo on that tank build. That guy just keeps stacking his Thunderbelt, and he doesn't even die, even with the Hellcutter or Natalia. So yeah, when there's a Hanzo, it's kind of really annoying, because it's like a tank which is giving a lot of damage, and somehow he is an assassin. So with this, all 4 bans already up, Freya being on the ban list. Well, of course she is kind of scary, she's kind of flex, I would say, jungle or the Ghouls, or even onto the EXP nowadays. But here we have it, Eudora and the Keto being final bans. And with this, the first pick for the side of Team Arleng. And then Peachy, even Mia is kind of, just like you said, she is also the meta right now, because she has the attack speed, and on top of it, after the buff on the Berserker, she can even go with a crit build and still be dealing a lot of true damage. So what couldn't you want? Attack speed, reposition, 12 seconds, after every 12 seconds with that Purify ultimate, she's scary. Definitely scary though, and Team Arleng ML did get quite a few victories with Mia as well, so for them it is really good. So Ace Invokers really going in for the soft counters already. A Belleric, as expected, will be seen onto their hands along with Ace Alena, one of the classic picks right here that you could be picking against a long range hero. Make that long range hero uncomfortable, that they have to reposition themselves, and that works out very well. So that is something they are trying to achieve with the Selena. Team Arleng ML goes in with a Kaja. It's kind of crazy how a Kaja was a one-man setup hero, and then has just gone into a 5-man setup hero, but Team Arleng ML comes in with a surprise. This is what I was talking about. They love to play the comfort hero on a different level. Gushin will be here as it is
So, Asiya, what do you think about that? So good Gujins, they can delete anyone. So then again, highly depends. Then he also even has that ultimate. So like I would say, like in the Nolan, he really needs to dive in. And if there's a Belric, he will be kind of stand away. But then the Gujin, he has that option of using his ultimate. And towards the late game, that cooldown of the ultimate is way too low. So I think it depends on the skill of the user, because it's also a 5-man, so and they already have a Kaja, so I think that can pair up really well with the fusion. And I don't know why they did not ban out the Kaja, because Kaja is really scary right now. With this range, he can take you away from one turret to the other with a flicker. That's how scary this guy is. So let's see how it goes for the side of Team Arleng, because having that Kaja, they already have a god, one stun, one ult, and then Gujin. The synergy pairs up really well. The burst will be insane, but that highly depends on how the Kaja is giving the sets. Meanwhile, from the side of Team Ace Invokers, I think pretty good bans again. Melissa, one of those marksmen who wouldn't be scared of the Belric, especially with the fighter emblem, because that's what she's being used upon right now. After this, we have a Ruby coming up. Let's see, they are cooking with the draft. I don't really know, PG, how they are going to make it work, because I think the synergy from the side of Team Arleng seems to be a bit more than the side of Team Ace Invokers, but then that highly depends on the Kaja. No, that's true. If the Kaja is able to give out such a good set, the team may be able to get their, skills as well as those farm that they are needed onto their hands. But Ace Invokers, they have wombo of the crowd control one by one. Let's talk about the Beleric. There's no less coming in from the Selena, and then the Ruby as well. One of the heroes that has been spotted very less despite having a major buff on her. That is kind of crazy to see how a hero has not been setting up, but there you go. Ace Invokers, despite seeing a sun, has gone in for a Granger. Now again, scrims, there's no a win or a lose. They're just trying to see what scenario works very well against what hero. So this might be just one of the things that we do see that they are trying to try it out, because Granger, as you guys already know, not in the meta and is heavily dependent onto the farm, the gold, the Sky Fiesta stacks. If you're not able to get it, the game does go little crazy on your hands. So let's see how it will be going. Team Arleng ML though, quite a good amount of fighters onto their hands. Now they have balanced it out with the jungler as well as the mage as well, which is a good thing to see. But at the same time, they will have to think about how they're going to set it up, because there's very less crowd control compared to Ace Invokers. Yep, but that doesn't really matter because they have the Kaja. But the Ruby pick is good here, because if the Kaja manages to ult them, while inside that ultimate, she can counter crowd control with the I am offended. So I think that's what they had in mind. And never mind, let's see how the execution of the draft goes, because this is the weekly scrims best of 3, Team Arleng going up against Team Ace Invokers. So then again, talking about the gold lane, it is a Granger versus Sun. So it will be really interesting, because the Sun really needs to be careful, because his clones are kind of a free stack, free last hit for that Granger. But then again, towards the late game or even from the mid game, since it is after all a Granger, he can easily kill him down. And I think he's gonna petrify, if we could see it once again. And yep, with this, the Selena stun already being connected. She's already level 2, goes in for the Gujin, and Colgate manages to save that Gujin for now. Crazy spotting right there coming in from Kaja. Now if the Kaja wasn't there, that would have been game over. No first blood yet, but that was such a close attempt right here. It's okay, maybe we would be seeing it very quickly, because Selena is known to be the early game hero, and that is what you were expecting. A bit of a pressure building up onto Han's era, which is really good, but at the same time there might not be much, since the Nolan is just level 4. He is fast, and Gujin is still level 3, so
I think Nolan is one of the fastest early game clearer, but we can already see a gank happening. 3 members coming up along with the Selena with the first skill. She's still level 3, but the Phobius is there. The stun connects, and there we have it. Ruby with the second skill. Selena dashing away like a Lancelot. The 4 member stun, and here comes the fracture in the first blood, taken away by Coltrong. Oh, this reminds me how good Coltrong is on our what's his name? I forgot it again. Nolan. Nolan, okay, they get the total. Oh, Maury Biscuit just so close, just an inch away. But what a save for the guard. As of now, looks like it's kind of crazy to see how the first blood has not set in by either of the sides. Colgate is trying to do something right here, still whipping around and flying, but the setup is not quite here because he is not level 4. And talking about the counterpart, the Belleric is already level 4. We would be expecting a Flicker coming in, but that's when even Selena hits it. Now, on theory, on paper, when you see a Selena and a Belleric, there's not much of a synergy that you would be talking about, but there you go. A bit of a slowdown for the Belleric that just hinders away Colgate. Oh, there's come the stun. Abyssal goes in for it. The Gushien gets one, and Sasaki thus gets the Kaja in between. Wait a minute. The Sun tries to do something, but no. He just is cautious as of now because he needs those items. My question is, Kaja, you had the opportunity to land up a 3-man ult. Why not? But that does not really matter because it's a 4-man sandwich. And Team Arleng kind of they're playing it so well, but then again, with this Team Ace Invokers who keep on showing that how good they are with the synergy. And my question again, why is Kaja not using their ultimate? Although the CD is kind of low, but then again, I think that was a perfect opportunity. He could have saved the Gusion, he could have saved himself too, and the God. I think Mario Biscuit, he was waiting for that setup so that he can do the one and ultimate combo. But it is what it is. The stun connects onto the Granger. I think Granger is also stacking up quite fast because I did see him taking up a lot of kills, a lot of stacks with the ultimate. Oh, there you go. Colgate will be taken down. The Abyssal right hit on perfect. Gushien once again will be falling onto the hands of Nolan. The stun, the Belleric's ultimate fits in so perfectly right here. Feels like the perfect hero you could be picking against the Sun. Again, something as a Kaja as well. Another Sun pops in. Sasaki is going in for a chase, but realizing they are too deep in. Goes in for the minion wave clear. But oh, Sasaki, I don't think you should be overextending your time right there. And, he is definitely going to go in for the recall soon. We could see the build. I wonder if the Granger has already built up that Sky. If he has the Sky, how much has he been funneled? Because he already is sitting on 2 kills, 2 assists. So yeah, the gold is kind of insane. Look at the Ruby. She's not even going for the defense boots at this point. She just wants to go for the CD build. But in the mid lane, once again, the Kaja getting stunned. The Kaja is facing a lot of issues. He needs to build up his items as soon as possible. And then once again, a mega kill as Gusion gets just killed off cam. Invokers goes in for the perfect 8 right here with 0 into the hands of Team Arleng. They're trying to get one more right there. Colgate really opening up the map for his teammates, but he does get stunned off. Colgate has to flicker out. Abyssal with his bullets gets 1. Now, you were talking about the Sky Piercer stacks, Asiya. Yes, he is building on that so perfectly, and his teams is letting him as well. So look at that. Coltrong able to take down the Sun as well. Off camera kill, a bit of a pressure into the mid lane once again. And look at that, Asiya. Will Gushien get a kill? I think Gusion, if he gets farmed, he can, kill a lot. But then right now the snowball is in the hands of the Nolan right now, but the Kaja goes in once again with his kills trying to fly over, but that does not really matter because once again it's a monster kill for the Coltrong. And just like I said before, you wouldn't want to mess up with a Nolan who has snowballed. His damage is insane, the gold lead is way too much. Look at him, level 11, and Gusion is level 7. What would you even expect at this point? So I think complete snowball, complete domination. Team Ace Invokers perfectly using this Selena as well as the early game combo which they have. Nolan
of course, as expected, the turtle into the hands. For the side of Team Arleng, though, okay, the Abyssal Arrow connects onto the sun. I wonder if his ult isn't been used up. He does get stunned off. Abyssal Arrow right on point. But will he be taken? No! Ronald flickers in, knowing the dangers. He's trying to wait Gushin as much as possible. He evaded it so perfectly. The 0-0-1 has to get out of the way. Onto that same note, you're talking about Colgate being there at full HP. Hanzera jumps it. He stuns as much as possible, trying to get it on. But no! Mari Biscuit does get stunned up by the Selena. Selena's Abyssal Arrow hitting right on point. Really predicting such a good time right here as well. Now, turrets are being opened up. Ace Invokers, look at that. They're not able to get members. And Hanzera, my goodness. Nice ultimate coming here, but Sasaki was just a second behind. The complete map is open into the hands of Team Ace Invokers. Gushin just trying to clear up that minions, but unfortunately will be a waste because the mid lane first year also been taken away. The map completely open for the side of Team Ace Invokers. So Sun, he's trying to do the Sun thing, trying to push, but okay, he is unable to. He's unable to move away with the recall and godlike for Coltron. Meanwhile, in top lane, Gushin all alone uses up the ultimate. He uses up the first kill, wouldn't dash in again though. And with this, I would say complete domination. 2 for 14, the core lead, the EXP lead, I think the macro lead as well as the micro lead. Once again, as Coltron goes in but gets stunned. But then again, it is Mari Biscuit who falls off with that flank. The Abyssal Arrow connects once again, and one more kill in the hands of Hanzera as Colgate gets taken down. Crazy, look at them, they're not stopping it in. Ace Invokers trying to get the perfect victory right here. Once again, they have pushed it through towards the inhibitors. Now, that's going to be real crazy if they were able to take one inhibitor down without the Lord. I do want to see if that's going to be happening or not, but let's look at the replay. Look at that. Colgate down first member, and it really set down our series like a dominoes falling in. And oh my goodness, here the Khaja did a perfect, wonderful job, but he will be sacrificed. He will be revenge kill as well. There is the 2 for 1, but hey, they're not over. Colgate thus gets attacked by Coltrong right there, but he does get stunned off. He tries to get out, and perfectly he does, and the wishing lantern almost right there hitting on him. I think that was good art from the Kaja. He even flickered inside, and Team Arleng, they did have the opportunity to take down a shutdown onto the Nolan, but somehow God did not have his skills. God has gone in for the Sky Piercer. I think, I don't know. I mean, it works good on the God, but then with what they are right now, but the Belric out. Ooh, let's see. There you go. Sengwei returns. Will be falling down once again. This time around, he's just looking forward towards as much as possible that he could be doing. But at the same time, triple kill for Sasaki. He's still going for more. Maybe able to get the Maniac. And yes! He does get the Maniac. He's trying to go in for more, but at the same time being very low on HP and his team not going in. Now again, that would be a bit foolish to go that much for a Savage, but at the same time, getting 40 stacks out here after dying as well, that is really good. Let's look at the Maniac once again, because hey, that was very perfect. Definitely, that was... I think Team Arleng, they need to back off for now. I mean, once the Fovis jumps in, he can't really go out, but it is what it is for him at this point. Team Ace Invokers is way too overfarmed. That's true. Look at them, they're jumping in with a lot, but no, Coltrong gets the God. That was definitely a lot. Once again, Colgate, he's trying to be there for this team, but at the same time, Ace Invokers are really pushy. They're really trying to push it in as much as possible. The Lord, oh my goodness, what a set from the Kaja. Really pushes down 4, but unstoppable for Sasaki. He does take down 0, was taking on too much turret damage. The Lord still attacking the base. They need to clear it out. They need to get the base, but no, that's gonna be Ace Invokers with the legendary on legendary, toppled off for them like a cherry on the ice cream. That's gonna be Ace Invokers for you guys. What a victory onto their hands.
With that, there you go. The results are up almost at the 11th minute mark. 10 minutes 59 seconds all it took for the team to get a victory onto their hands. Holtrong, on to the other hand, 11:09, thus gets the MVP. Very close contender was Ronalds as well, who was at the 0 death along with the Nolan, which is kind of crazy to see. But for Team Arleng ML, they need to get crowd control. We did see quite a disparity between the crowd controls, despite Kaja giving such a good set. He waited for the perfect timing, he waited to get it on so perfectly, but at the same time it was definitely too late. At that point it was team Ace Invokers really having the gold, the farm and everything onto their hands, that they were able to melt down, especially Sasaki. I'm pretty sure he almost would have touched 60 or more than 60 stacks on his Skypius as well. So kind of curious to see what's the second match gonna look like. Other than that, I do want to see how Arleng ML thus gets a comeback as well, because this time around they will have to work on a bit onto the crowd control. If the team has gone in for a Belleric, I do believe the respect ban is much needed onto the next matches. So let's see if that comes in or not. Yep, definitely. With the second game, let's see how it goes, because at the end of the day, it is a best of 3, right? Yep. We need to see how the teams will be trying to carry it over, trying to get the third game in, or our Clash of Starlight victors, Team Ace and Invokers, gets it in a clean sweep. Really curious to see what is it going to be. Other than that, the teams will be ready in a second. Our second match will be starting up as soon as possible. So do comment down which team will be winning and which team do you think has the upper hand too. Would love to know your thoughts as well. So ladies and gentlemen, do let us know. Other than that, do check out our socials, and as usual, the registrations for the scrims will be open at 12:30 every day at the Discord server. So you do need to join it, do need to fill up a form to participate if you and your team wants to practice, because this is such a good opportunity to have such good teams against your team and have and you could try anything. There's not going to be any judgment, there's not going to be anything waiting up for you. Even though you lose, it's still a scrim. Best place to practice, right? Most of the teams, they look for they go out for rank to improve, but then rank is kind of conditional, and in the scrims you're not losing stars, so you don't even have to rage out on your teammates for making you lose. That is true. That is definitely true. So let's see how it would be going around. But hey, looks like there would be a bit of a technical issue with the teams, maybe waiting it out. So let's wait for them to come back as well. Other than that, is there like any teams are you guys wanting to see in our scrim? So do let us know as well. We'd love to see if those teams are up for scrims or not. But other than that, as usual, you guys know the drill. Discord server, there's going to be everything up, and if you guys do also want to see similar events like the Clash of Starlight, do let us know as well. So are we supposed to go for a short break, shall we? Or we wait it out? Let's wait it out. I feel like teams might be here in a second. I have a feeling, maybe. And then talking about the drops, I think talking about the drops, PG, they did have a really good early, and Team Ace Invokers, literally the way they controlled the entire map flawlessly. But then again, I would say there was some execution issues even coming in from the side of Team Arleng, because they had a Kaja, man. Kaja is, I think, very strong right now. They had a God, even though he got nerfed, but then he still has that poking potential. So I would say, the Kaja did not use his ult early,
And when the enemy team Ace Invokers, they could see that the Kaja is there with his ultimate open to use. First, the Selena stuns him down. There's the Belric with the taunts. Then there's the Nolan with his fracture. So it's like I said, way too much crowd control. Everything just used up onto that Kaja. So even if he wanted to ult, he couldn't really ult on time. So I think that was a good way to shut down the Kaja. I think Team Arleng, if they could have played a bit more aggressive, a bit more synergistically rather than being on the reactive side, because Kaja was so open into the map, it was really easy for the Selena to, with the amount of vision they were getting from the Belric, it was really easy for the Selena to stun lock him down. So maybe let's see if the synergy improves, because this is the best of 3 after all, and in the first match, teams You should be do test ashamed the for not waters. trusting yourself. That's true. Let's see how it would be going around, because Kaza played it out very brilliantly with his ultimate. Even to the last time, he got such a good set. But the team having such a low farm really set it off that they were not able to perform. But other than that, Ace Invokers will have the first pick onto their hands. That means the Atlas and the Belleric is out of the way. And we talked about the Eudora into the first match. Looks like it won't be opened up, and that means something like a god or possibly a Farsa might be coming in this match. So let's wait and watch if that's the case or not. Team Arleng ML goes in for a 5-man setup, and this time around should be banning the Kaza. Don't really see the Kaja as of yet. Let's see what Team Arleng is planning, because Paquito is open, but then again, the only issue with Paquito is, 5-man set, he's kind of counterable, because at the end of the day, it's not random, so you're playing rank with. It is a 5-man draft where you are supposed to communicate, where you can literally shut down and trace down the Paquito. So okay, it is a Link, very interesting choice. The Aurora being banned away though. But right now, Team Ace Invokers, they have a lot of options open. They can go for the God, they can go for the Paquito, they can go for a Zushin, they can even go for a Kaja. Kaja is also open, Hanzo is open. Okay, it is a Paquito. Oh, there you go. Ace Invokers goes into the EXP lane now to get a bit of a protection. The soft counters are coming in. Not exactly a counter, to put it up, but it is something where it works out very well, because you do need a way to try to get out of the Paquito's range. So something like a Valir is really good. But Team Arleng ML no less goes in for a Esmeralda. Such a beautiful pick, but Ace Invokers, knowing there's an Esmeralda, goes in for Uranus as well. This is how you practice, this is how you try to get a good set as well. Look at that. Now Esme Uranus goes long back, way long back, that so I'm kind of curious to see how the max lineup will be going around. But if a Uranus is picked off, does that mean a golden Paquito or a jungler Paquito? I think it's a I don't know, maybe it is a gold Paquito. Let's see. Let's just bet on it. So yeah, with the Valir open, now it makes sense why the Link has been banned away. Because Valir is so annoying. He's just so annoying for our fighters, for our tanks. But then the only issue is, once his flicker has been used up, it is the assassins who can just catch onto him, lock him down. So yeah, the Uranus and Paquito definitely might be suffering, but if the Paquito is on a flicker on the gold, he can flank away the Valir and delete him if he has stacks on the Sky Piercer. But let's see how it goes, because right now the Esma as well as the Mino comp really strong. Esma ain't dying that soon, man. Because the Selena has been picked up once again, so if they have a strong early once more. Let's see how Team Arleng, knowing that how strong Team Ace Invokers are into the early, will they be able to handle that pressure? Let's see, a lot of marksmen coming in from the side of Team Ace Invokers to get banned off. Now with those kind of bans, that they are trying to prioritize, the side laners as much as possible. They don't want to make sure to not get those melty kind of heroes. Arleng ML, come on, I do want to see a Mia. That would be such a good hero as well. Like
because it had been such a signature hero for you guys. So I do want to see Mia coming up, but other than that, there you go. It's going to be a Lancelot onto their side, and along with a Lancelot, would love to see what is it going to be onto the marksman. Ace Invokers goes in for a Gatotkacha as well as a Irithel combo. That speaks very good, but at the same time kind of worried that the Irithel might not get the space, because there you go, it's gonna be Mia. Damn. Irithel in front of a Mia, of course the Irithel loses out, because once Mia is farmed up, she's already so annoying. She can literally even melt down towns right now. And Irithel really depends on her passive where she has to move around, but one lockdown from the second skill coming in from Mia can, like one ult, 1 second, inspire and she's deleted. But then that too highly depends on how the team is playing, right? If the Gatotkacha is there, if the Selena is there nearby for the Irithel, she can definitely move around this draft, because I think because she can outrun the Esma, she can dodge the Lancelot, she can even move away from the ultimate from the Mino. When the gaps on the knockups come, she can just move away with the ult, so she has kind of a small dash. So I think, except for the Mia, really makes sense for the Irithel to be here. But then here we are in the land of Dawn. This is the best of 3 between Team Ace and Invokers going up against Team Arleng, and Team Arleng already kind of on a loss. So it's a match point for the side of Team Ace Invokers. Let's see if they're able to get a clean sweep, or will we be seeing a comeback on the side of Team Arleng. Let's go, ladies and gentlemen. I hope you guys are ready for an impeccable match that's going to begin. That's going to be the second match of the day of the first series. This time around, Team Arleng ML has brought up something different as well. So kind of curious how that is going to work out. Other than that, I really love to see who's going to pick up the first blood as well, because our Team Ace Invokers love to pick up the first blood. Look at that, into the mid lane once again. You do see Mari Biscuit being taken down quite too low. There's a revive flies coming in from Zero as well, and Ronald goes in for the first blood. He gets the lead right on point blank. Dorimi also looks very low and will be falling down. Team Ace Invokers, as usual, first blood for them. And also a double kill. I mean, they have already set into motion, because just look at the way the Lancelot's jungle is getting delayed, even getting stolen at this point, because it is a 2v3 going on. Once again, the Lancelot dashing around and called wrong. I think way too much overextension out there, but the Esmeralda also joins up. It's a 4v1 situation, and they did not even have the Selena. Why did they commit? They just gave away what they had. That is not good. That is definitely not good. And Selena picking up kills on kills as of now is just crazy to see. Look at that. It's sitting on a 3 kills. Like all the kills that we do see onto their hands is right there from the Selena. But as of now, would love to see what the team's going to do, because the main action is gonna be right here around the turtle. Turtle's up. That means teams are looking forward to something as well. But hey, Dorimi taken down quite too low already. Again, Coltrong thus gets the turtle. They're trying to go in for Prime as well. Prime thus gets out at the right moment. This is the only issue with the Minotaur. Late game is crazy. His heals are insane. No one will be dying. Even his damage is kind of really good. When in the early, if you lock him down, if you gank him, he's a sitting duck. He's so easy to shred down, and we can already see that happening, because even the Revitalize isn't able to save them from the assault which is coming in, especially from that Selena, because her arrows, the damage, of course she is the early game queen, and also the way the Gatotkacha is giving with the vision, the way he's taunting them for the Selena's arrows to land, I think it's working out really well for them. That is true. Look at them. They're trying to get it on as quickly as possible. The top lane as well. They're trying to put a bit of a pressure, which might be coming here soon. But before that, a bit of a stun
Bottom lane, Uranus not looking quite good. Prime jumps in into the turret while Hans Era is trying to get advantage of the turret as well. But looks like it's going to be Hans Era as well as Prime leaving safely right here. And now I did notice that Policy Biscuits have picked up the Wind Talker, one of the main items for Mia. Kind of crazy. I do want to see what is going to be, but into the mid lane, Doremi goes in for a set. There's going to be very low, but Coltrog does gets a kill as well. Now again, Ace Invokers are really good at taking those kills whenever they do see someone low. I mean, I really loved how that was on point 3-man ultimate, but then Selena dashes away, Kacha moves away, Sip. Once again, the Mia getting stunned used up the ultimate just to move away. She has the pre-purify. And just like I said before, the Wali really can't give you a follow-up, right? He's kind of a burn mage with not much mobility. So if the Kacha just locks down his first skills, which he did over there, and then the Mino was all alone, I think the flicker was not necessary because the Lancelot, who is supposed to follow up that ultimate, coming in from the Mino and Fury, then Lance is also getting zoned away, or somehow he's just not confident enough to dive in into so many people, to dive in into a Selena or a Gadot Kacha. I don't know what is wrong with him because I love the synergy of the Gadot Kacha as well as the Selena. One taunt from the Gadot, but never mind. Look at Larissa, really low, and it is the Lancelot who goes in but has finished up his dashes. And with this, it will be Mia who will be dealing the finisher blow. But with this, once again, it will be Selena as well as Coltron taking up the last hit. The AOG coming in once again. The stun connects down onto the Esmeralda. The revitalize has been used up, but it will not be saving them from the damage coming in from that Selena. And with this, 4 members right down onto Doremi next on the chopping block. Oh my goodness, Ace Invokers completely taking control over everything possible. They have now gone towards the turtle. Now again, they had no contest whatsoever right from the game number 1 as well. You have been seeing how they know to take down one member and then go for those neutral objectives. So naturally their response is going to be them opening up the turrets. Now Pali is realizing that he is stuck somewhere at a very bad situation, goes in for the ultimate and accepts his fate, will be falling down with Dorini. 4v2 situation. Team Arleng ML should have gone behind. You know, the Mina was trying to save the Mia, but he was still locked down by the Selena once again. And meanwhile, it is into the bot lane. Uranus getting ganged up by 3 members. But that really doesn't matter because he is really hefty. He has the passive. Look at him healing up. So I think instead of chasing down the Uranus where he couldn't even accomplish anything, I think the Uranus did a great job buying out time because instead they could trade it off with their marksmen as well as the Minotaur into the top lane. And at this point, I think once again, the stuns, the Gadot Kacha doing a great job. Even the Valir isn't able to, help him down because he already has that radiant armor. But this Selena once again goes in after the Uranus. Just look at the zone coming in. The AOG drops in, does not really connect onto anyone as it is a flicker being used up, the revitalized by the Gadot Kacha. But the ult coming in, the stun connects barely. And with this, unfortunately, it will be the Selena taking down that kill onto the Lancelot, man. And with this, once again, Team Ace Invokers really doing a great job. Complete control of the map, complete control of the micro as well as the macro. Once again, Mino is kind of all alone. He isn't that tanky right now, really needs to group up together once again. And the Paquito goes in once again, the Abyssal Arrow connects and unstoppable as Doremi falls once again. Just look at the zone coming in from the Uranus as well as the Gadot Kacha right onto the Lancelot. He's trying to dash in and the ultimate, trying to melt down the Uranus, but that doesn't really matter because lanes have been cut off and the macro is into their control. Uranus is kind of really hefty right now. The Esmeralda can't really do. I think both of the EXP laners can just pay to one against the other. Valir coming in for just some help. It's just the Uranus buying up time, man, at this point. Because just look at them. The Paquito going in for the objective once again. The Selena with the Abyssal Arrow. The Lance dashes away. Once again, really good aim onto that Abyssal Arrow, but then it is blocked by the Mino. The Mino fully comes up. 3 members start coming in and the Frost Moon, Esmeralda jumping in, but the Abyssal Arrow as well as the damage coming in from the Coltron. A 4-man stun coming in from the Mia, and at this point, the goal lead is way too much for them to surpass.
Team Arleng ML needs to take a pause as of now from the fight, but Ace Invokers are not stopping in as well, so that's going to be a problem. Anzera will be falling down first. AOG drops in a bit outside, trying to get out, but no, the stun! Parleji Biscuit, what a double kill, but he just gets traded out, will be taken down. Primarily Fran tries to get as well, out as well, but no, will be taken down. 2-for-2 trade right here. Team Arleng ML is trying to get a comeback, but at the same time, Doremi, the tank, is not able to get a good set. Now, you know, him taken down far quite too many times, and on top of that, not being able to get a set because of how much of a crowd control the team Ace Invokers are giving in is kind of crazy to see. Look at that. It's just 3 times off the kills. Oh, 1v1 situation. There comes the skill right there, and it's gonna be Lancelot falling down against Sasaki. Now, 1v1, that too, Team Arleng ML was just not it, because they don't have the farm as of now. I mean, that was a good bait coming in from the Irithel. She did have the win, but a 2-man set coming in. Mari Biscuit takes down Uranus finally, but here comes Coltrong. The Revitalize has been used up, but the Abyssal Arrow connects. Mari Biscuit will be falling down, and finally shut down as it's the Esmeralda who gets that kill onto Coltrong, but once again, the Abyssal Arrow and a killing spree for Sasakai. And with this, Team Ace Invokers just trading off, taking the revenge really low, but then it finally manages to shut down the Selena. And with this, the Esmeralda trying to go in. Well, look at the Mia. She's literally trying to split push. The Irithel is coming up. She might as well camp for the Irithel, but here comes the Karot Kacha trying to lock down onto the Mia. Mia needs to run back because she'll just be activating the passive from the Karot Kacha. And I think at this point, with the goal difference, with the level difference, I think even the Gato can solo down the Mia. 100% right there. And on top of that, let's not forget Hanzera does have a vengeance as well. That would be such a perfect combo for them as well, and that's one of the reasons why you do see a vengeance in the team, which is much needed. Look at that. Lords will be taken down. Onto the last match, we were not fortunate enough to see a lot coming in because the team really ended in quite early on. They did not give any chance for the side of Team Arleng ML to go towards the minute 12th as well. So that's going to be kind of crazy, and this time around, do want to see how they will be trying to do it on. Team Arleng ML need to go for a defensive mode, and when they go to a defensive mode, they don't have to fight. But this is what I was worried about. Prime Elephant trying to be the secondary tank. He's trying to tank it all up, but Hanzera is up right there. AOG drops in, catches one right there. That's gotta be the Lancelot. Was not able to get out. Palsy Biscuits, quite a good amount of damage, but already taken down too low. That's going to be the Ace Invokers farm the items plus how much they could. Oh, they try to get something right here, but no. It's gonna be the Irithel melting down members one by one. Catches up to a double kill, and Zero almost killed right there as well. The base is quite open right there for the Irithel to take it down. One member right there. Oh my goodness. Ultimate for the save for this Mia. If the ultimate wasn't there, it could have been really hard for Team Arleng ML to get the game onto their hands. Look at that. They're trying to evade those stuns. They're trying to make sure the minions are out of the way, but the pressure of the minions is just quite enough for them that they have to hold it out. Definitely, and the way the Esmeralda, I think she should have gone back. She jumped up, managed to stun down the Irithel, but the follow-up from her team wasn't there, and of course she just gets caught up on that Abyssal Arrow, gets taken down instead. So, what can I say, man? The Selena, definitely the star of the show, especially the Karukacha and the Selena combo, working really well for them. The Abyssal Arrows connecting left and right. The damage is also kind of insane at this point, and only one inhibitor remains for the side of Team Arleng. Their only hope now is like maybe let the Mia farm up, or maybe play around the Mia, because even the Minotaur sets are not working, his heals are not working, and it's definitely because just look at them. Level 15 Coltrong, level 14 on Hansera. The level difference is crazy right now. Mia is level 13, Mino is level 11, and I think he's the one who fell down most. Gave away a lot of kills, gave away a lot of gold, and I think he should have played a bit safe because Minotaur is very squishy into the early, but then did not really took that into consideration. But that doesn't really matter because I do see the Abyssal Arrow gets locked down onto the Esmeralda. He has to go back.
Okay, the rest of the team also trying to follow up, trying to melt down Doremi once again, maybe forcing out that ultimate or the revive has been taken down. But with this, a 13-minute Lord, a 14-minute Lord will be coming up really soon. Now, will Team Arleng be able to defend and hold on, or will it be the end with this Lord? Would love to see what's going to be the outcome, because Team Arleng ML does have the perfect minion clearance, perfect lane clearance onto their hands, so that's going to be no problem for them. But the only problem is when Team Arleng ML really jumps in, takes the fight there, that's where they lose. They're trying to push it down. Look at that. They know the number disadvantage that Team Ace Invokers have, trying to push it down. That's the tankiest of the tankiest members. They're waiting it up, but onto the back lane, that's going to be godlike for Sasaki. He's all alone and he will be taken down. That is 1 for 3. Mari Biscuit, Doremi as well as Sengwei will be taken down. And looking at the itemization as well, you could see the farm difference so much being up. But wait a minute, this Apology Biscuits is getting targeted by Hans Era. Look at that, the damage coming in from the Mia as well. They get that, but there is still a cannon minion still waiting it up. Apology Biscuits does have the stacks, Selena stacks, but wait a minute, the lot's coming in. That's gonna be Prime Millifan being a tank right there. He's trying to get it, but no! Else with the flicker, he gets the Mia. The Lord's in, the Lord's targeting the base, and the minions are in as well. Ronald's taken down, but what about the Lord, which is targeting the base? And no, just an inch away. Wait a minute, will Zero go and target it? But no, inch of a base still left, and Team Arleng ML successfully defended it. Somehow they managed to defend it. I think Team Ace Invokers, they should have. I mean, that was a good opportunity because all the backliners were kind of dead instead, except the Mia, and even the Mia was dead, but then they should have waited for the Lord. I think it would have been an easier end for them if the Lord was there, because Doremi was kind of already, he had used up his revitalize out there, and the ultimate is not really giving them a hard time because like I said before, Ithil can dash away, Uranus can dash away, Selena can dash away, Pakito can dash away, literally everyone can dash away. So I think a bit of a breather time for the side of Team Arleng out there. They somehow managed to defend, and of course this replay, man. The way the Selena is playing, I'm really a big fan because the Abyssal Arrows connects, the damage is insane, and with the flicker, she knows what to do, but then of course, kind of a bit of an overextension out there, but somehow the Esmeralda managed to save that base from the Lord. That was just one hit away. It's kind of crazy gameplay coming in once again. And with this Team Arleng still holding on for the Mia to farm up. Okay, the Erythel, she really does have the wind of nature, so even the Lance can't go in for them. Doremi just trying to be the front, trying to poke. And at this point, I think the Abyssal Arrow kind of connects onto the Wally. The flicker being forced away, but he needs to back off because the Abyssal Arrows, they just keep coming for them, not even giving them the room. Whenever they're trying to look for some space, look for some strategic position, they need to look for an Abyssal Arrow. It just keeps literally destroying their positions. My goodness, the amount of arrow that has been coming in the way of Mari Biscuit is definitely bonkers. But at the same time, Ace Invokers are pushing it down. They're making sure the minions are jumping in, and they have reached to a point where the third Lord is going to be up. And this is where Team Ace Invokers will be trying to end it all. There's no inhibitors left, so that means Team Arleng ML will have to work it around trying to defend themselves, or it would be a scenario where we have seen in the second Lord. But talking about the itemizations a bit, looking at the Esmeralda, really good job on taking the blade armor, knowing that she is the secondary tank right here. Definitely, but Valir, I think he's going in for the concentrated energy, the last item. But Doremi just giving some knockouts. Lance also just poking away, but look at the damage. Kind of got it immune, but who is stopping this Selena? Literally no one to stop down this Selena. The frontliners are also really annoyed because she just knows when to stand. It's when Doremi is going out, coming in to give a set, or when it's just the Esmeralda trying to jump in, she just stops them. She stuns them midway so that they can't execute, they can't go for backup for help. But look at the damage coming in even from the Uranus, the Erythel with the ultimate trying to take down the Lancelot, and the Mia is down. I think this is the final March, PT.
Might be it, and there you go. It's gonna be Ace Invokers in a clean sweep once again. They managed to get the game so perfectly. Especially Sasaki onto the last moment. He pushed it out so much as possible that they did not allow anyone right there, and rightfully so. Ronald will be having the MVP this time. Well, definitely, because the damage and the accuracy, the point, the priority coming in from the Selena, really good. And even though the Selena does not really work out that good towards the late game, still she was able to disrupt their positions. She was able to disrupt the key points where the tank or even the secondary tank, like you said, the Esmeralda, want to go in, join in to save their marksman. So yeah, and then once again, they kind of underestimated the damage of a late game Aretha, because even though Mia was kind of a counter, but then Mia wasn't getting the space. The gold lead was massive. They had multiple targets to defend. I would say even the Lord was coming, the hefty minions were coming, not even a single inhibitor. So yeah, the entire attention was kind of divided. And I think a bit of more synergy from the side of team, from the team, could do them a bit more better, because I think Dorime, the way, your hero, right? Because Mino is really squishy, so why go out so open into the early when the enemy has such strong early that you are the one giving them the gold, giving them the beat. My goodness, Ace Invokers really got the game so sweetly onto their hands. Now with that, they are the first winner of this week. So kind of curious to see what is going to be happening very soon, because the next few teams are ready for it. So Asiya, let's go for a break. Yep, we will be going in for a short break, but do stay tuned because we have 2 more scrims today. Thank you for joining us.
स्वागत है देवियों सज्जनों आप सभी को। मैं सीजी, मेरे साथ रहेंगे शिनरा फॉर द सेकंड गेम ऑफ द नाइट। जी हाँ, फिर से स्टार्ट हो चुका है आपके प्यारे मोबा वार्मअप क्लास सीरीज यानी कि स्क्रिम्स। क्योंकि पिछले बार जो है आपने देखा था पिछले हफ्ते 4 दिन की एक छोटी सी टूर्नामेंट जहाँ पे हमने रखी थी 5 स्टार। बिल्कुल हाँ जी। और वही जो टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे थे बेसिकली वो छोटी सी जो टूर्नामेंट्स थी वो बेसिकली यहाँ पे चल रही थी। और उसी के साथ जो है वहाँ पे टीम जो है वो जीती हुई गई थी पिछले बार। तो लाइक एस इन्वोकर जो है चैंपियन बने थे उस मैच के। और रनर अप की बात करें तो वो यहाँ पे रही थी वैलियंट क्रूज। और लाइक जिस तरीके से एस इन्वोकर्स ने खेला भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बोलूंगा यहाँ पे खेलती हुई गई थी वो। और चलिए इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो है वार्मअप क्लैश यानी कि जो स्क्रीन से दोबारा से आती हुई दिखेगी टीम जो है थोड़ा और प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगी, खुद को इम्प्रूव करने के लिए दिखेंगी। और स्क्रीम्स का देखिए मोटिव यही रहता है, हमको पता है जिस तरीके से आजकल जिस तरीके का मेटा यहाँ पे चल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है एसटीजी देखने के लिए। अगर देखा जाए तो काफी जगह अभी डोरा का पिक बताया तो वहां पे वो पड़ गया है, वो काफी ज्यादा पिक होता हुआ दिख रहा है। अभी ना पावर जो है बेसिकली वो शिफ्ट हो गया है। लाइक प्योर टाइम पहले डोमिनेट कर रहे थे जंगल पे, आप बात करें रोम्स के तो वहां पे अब वो शिफ्ट होकर थोड़ा असैसिन की तरफ आ गया है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जो डैमेज ओरिएंटेड है यानी कि असैसिन जंगल है तो मेटा जो है वहां पे थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो टीम फाइट पे ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब जो कंट्रोल वगैरह रहता है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ चलेंगे हम लोग सीधा यहाँ पे ड्राफ्टिंग फेज की तरफ। टीम जो है यहाँ पे रहने वाली है एक तरफ अपने जो है ऑनियन रॉयल्स, दूसरी तरफ यहाँ पे रहेगी इलाइट स्पोर्ट्स। ओके ये मैच काफी ज्यादा मैं कहूंगा मजेदार होने वाला है एसटीजी। लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक यहाँ पे जाता हुआ देख सकता है। और इसी के बीच में बेस्ट ऑफ 3 की सीरीज रहेगी तो बड़ा मजा आएगा कि ये 3 मैच किस तरीके से जाते हुए हमें दिखेंगे। अब बात करें यहाँ पे कि जिस तरीके के जो बैंड्स है वो पिक्स हैं वो किस तरीके के होते हुए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो चलिए मार्शल यहाँ पे बैन कर दिया है। उसके साथ साथ अभी भी ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं आपके, 2-3 हीरो जो हैं वो खुले रहेंगे, वो आपको बैन करने पड़ेंगे। बेल्डिक हो गया, इडोरा हो गया। लाइक इडोरा अभी थोड़ी से बोल सकते हैं कि चेंजेस के ऊपर चल रही है कि उनको फटाफट से आपको बैन करना पड़ता है। अगर इडोरा आप बैन नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी असैसिन्स को दिक्कत होती है। और मार्शल भी एक वन ऑफ दी मेन रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि उनका जो किट है बेसिकली जो स्किल किट है वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत देता है असैसिन्स को। उनका जो पैसिव है जो लगातार वहां पे पड़ता है एनिमीज को तो उनके वो कॉम्बोज कहीं ना कहीं डिले कर देता है। उसी के साथ साथ लेट्स सी इलाइट स्पोर्ट्स की तरफ से क्या बैन आता हुआ हमें दिखता है। Yes, and we have seen this game before. Elite Esports, Mauryans Royals इन दोनों ने एक बार खेल चुका है और उसमें हमने देखा था Elite Esports ने विजय हासिल की थी। बट Mauryans Royals क्या वो आज बदला ले पाएंगी उनकी टीम की तरफ से? ये लास्ट गेम आई विल टेल यू आर्लिंग एमएल जरूर हारी है बट एस इन्वोकर के साथ एक टक्कर की मैच देकर हारी है। They played well, they have tried their best till the end they tried. मुझे लगा नहीं था कि इतना देर तक टिक पाएगी एक टीम जो कि चैंपियन टीम से, और वो चैंपियन बनी है अभी हाल फिलहाल में। एक छोटी सी टूर्नामेंट का मैटर करता है क्योंकि उसमें 16 टीमें जो है पार्टिसिपेट की थी एंड उसमें एलिट स्पोर्ट्स एंड S9 मोरियन रॉयल्स भी थे। बट सैडली दे कुडंट मैनेज टू गो इनटू द फाइनल्स बट इट्स फाइन। वही देखते हैं क्या होता है। एलिट स्पोर्ट्स वो एक टीम में से एक है जो सेमीफाइनल्स तक वो रास्ता चुने थे उस क्लैश फॉर स्टारलाइट की टूर्नामेंट में जहाँ पे उनको हार मिली थी टीम वैलेंट गोल्स की तरफ से एक BO3 सीरीज में। बट आज मॉरियन रॉयल्स के अगेंस्ट ये गेम, और सबसे प्यारी बात ये होती है एलिट स्पोर्ट्स की कि इनके अगेंस्ट जो टीम खेलती है उनका एक्चुअली क्या होता है कि लाइक सर्वर चेंज होता है क्योंकि वो दूसरे सर्वर से बिलोंग करते हैं जिनका। तो डेफिनेटली दिल्ली सर्वर और बंगाल सर्वर में दोनों सर्वर में अभी ये खेल होगा BO3 सीरीज। नॉट श्योर कि पहला मैच, आई थिंक पहला मैच ही जो है वो दिल्ली सर्वर में हो रहा है क्योंकि एलिट स्पोर्ट्स के पास सेकंड पिक है। देख सकते हैं फर्स्ट पिक यूडोरा, आप बात किए थे उसकी स्टन की और यहाँ पर मौजूद होते हुए एट द हैंड ऑफ मॉरियन रॉयल्स। देखते क्या काउंटर में पिक करती है एलिट। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखा जाए इलाइट स्पोर्ट्स लेट्स सी उनकी तरफ से क्या पिक्स हमें आते हुए दिखेंगे। इडोरा जरूर पोक करती है, डैमेज देती है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्नोबॉल की जरूरत पड़ती है।
तभी उनका जो डैमेज है वो अच्छी तरीके से निखर के आता है। और लाइक अभी थोड़ा सा देखा जाए ना तो इडोरा के ऊपर लाइक काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी करके देखे थे बीच में हमको, लाइक जब एडवांस सर्वर पे इनके ऊपर वो चल रहा था तो बीच में हमें इडोरा हाइपर भी ऐसा देखने को मिला था और लाइक काफी अच्छे तरीके से चल रहा था जब उनका थंडर चार्ज पैसिव यहाँ पे यूज हो रहा था लाइक क्रीप्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वो पोक करते हुए देख सकते हैं जी, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे सामने की तरफ 2 फ्रंट लेनर्स उठा लेंगे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी चल रहे हैं। बात करो यूरेनस की तो इस समय मेटा पे सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं एक्सपी पे जो सबसे सेफ पिक लगता है मेरे को वो है यूरेनस। लाइक बहुत ही इजीली आप जो है सारा डैमेज सुकअप कर सकते हो, लेन अपनी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हो। और चलिए उसी के साथ यहाँ पे डायरॉथ का आगमन होता हुआ दिखेगा, ये काफी अच्छी बात मेरे को लग रही है। डायरॉथ अर्ली गेम की बात की जाए तो अर्ली गेम पे आई डोंट थिंक कि डायरॉथ से बढ़िया कोई फाइटर है लाइक जिसके पास वो डैमेज का एडवांटेज हो, क्योंकि डायरॉथ का जो बेसिकली अगर हम बात करें ना पेनिट्रेशन की, वो एबिलिटी जो है उनका जो पैसिव है वो बहुत ज्यादा काम आता है ऐसे टैंक की एक्सपी के तौर पे। और यूरेनस के सामने डायरॉथ कैन इजीली मेल्ट यूरेनस अगर वो अच्छे तरीके से खेले। डिपेंड करता है किस तरीके से यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। नहीं, ये बात आपने पक्की बोली और मैं आपको इसलिए कट किया क्योंकि एक चीज है, कल मैं देख रहा था ओनिक वर्सेस टीम ओनिक इंडोनेशिया वर्सेस टीम अल्टर ईगो का, वो पहला मैच था कल ओनिक का एम्पेल इंडोनेशिया सीजन 18 का। एंड उसके दौरान पीएमजीसी के दौरान मैं देख रहा था क्योंकि जब ब्रेक हो रहा था तब पॉसिबिलिटी उनकी मैचें चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मैं। एंड वहां पे नीनो ने लिया था डिरॉथ एंड द सेम यूरेनस वाज इनटू द हैंड ऑफ लुफी। एंड मैंने देखा एक चीज देखा डिरॉथ के साथ जो गलती हुआ नीनो का, एंड दैट इज कि उनके ऊपर जब गैंक हो रही थी वो डेफिनेटली डैमेज दे रहे थे। व्हेन डिरॉथ का वो आपको पता है जब एनहांस फॉर्म आता है, जो आपकी स्किल एनहांस आता है सेकंड एंड फर्स्ट का विद हिटिंग ऑन टू द क्रिप्स और मिनियंस और एनी हीरोज, वो स्टैक बढ़ के आपके पास एनहांस फॉर्म आता है। तब जब आप एबिसल फॉर्म में जाकर अटैक करते हो बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, डैमेज इतना ज्यादा रिसीव होता है सामने वाले को कि उसका मोस्टली लाइक 30 to 40% रिड्यूस हो जाता है हेल्थ पे। बट द मेन रीजन उसके बाद आपके ऊपर जो स्टन आती है वहां से बचना मुश्किल हो जाता है। दैट स्टन वाज बीन गिवन बाय सांस एज वेल एज दैट स्टन वाज गिवन बाय केलरा ऑन अ पकीतो। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ पिक्स जो है डिरॉथ को परेशान कर सकती है एंड हैंजो इज वन ऑफ देम। इवन आई कैन सी कि वैलेंटीना विल बी वन ऑफ देम, क्योंकि वैलेंटीना यहाँ पर यूडोरा की अल्ट चुरा सकते हैं, पकीतो की अल्टीमेट चुरा सकते हैं। तो दोनों चीजें डिरॉथ के लिए सही नहीं होने वाले। और जितना मुझे लग रहा है यहाँ देखकर कि ये डिरॉथ इज गोइंग इनटू द जंगल राइट, कह सकते हैं। और लाइक देखिए अब डायरॉथ के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर ज्यादा स्टन लग रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा टैंकी आइटम डाल लो। अगर आप एक डैमेज आइटम भी डालोगे ना और 3 टैंकी आइटम भी डालोगे तब भी डायरॉथ का डैमेज आता है भाई, और बहुत ज्यादा आता है। लाइक जो उसका इनाइंस बेसिक अटैक जब पड़ता है उसमें हील बहुत ज्यादा मिलता है। एंड उसके साथ अगर आप लाइक एक अपना वॉरेक्स वगैरह डाल लेते हैं या फिर अगर उसकी जगह आप क्वीन विंग्स डाल लेते हैं तो सेकंड आइटम में अगर आपने क्वीन विंग्स डाल लिया अपना तो आपके पास इनफ डैमेज रहता है, इनफ डैमेज रिडक्शन आपको मिल जाता है कि आप एक फाइट तो सर्वाइव करके निकल जाओगे। यस, उसको सीसी बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। इवन तो अगर वो मर भी जाए ना तो वो अपना काम करते हुए चला जाएगा, या तो वो कोर को निकाल देगा या किसी एक ऐसे सीसी मेंबर को निकाल देगा जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। डायरॉथ का सबसे बड़ा लाइक आप बोल सकते हैं काउंटर ही सीसी है कि दूर से अगर रेंज वाले हीरोज रहे अगर उनको सीसी दे तो दिक्कत होती है। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से प्लेड आउट किया जाता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और अर्ली गेम पे डायरॉथ को सैबोटाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायरॉथ को अगर फार्म करने के लिए आपने मौका दिया भाई वो रेन रोटेट करके ना यहाँ पे आपकी मेज को या फिर एमएम को इजिली यहाँ पे जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ बात की जाएंगे यहाँ पे जंगल की तरफ जाते हुए दिखेंगे और पकी तो जंगल गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हंजो बात की जाए अभी मेटा पे काफी अच्छी तरीके से निखर के आ रहे हैं। लाइक जब से इनके ऊपर एनर्जी वर्क के ऊपर काम किया गया है, आप जब भी कोई असिस्ट वगैरह लेते हैं तो एनर्जी जो है डिप्लीट इतनी नहीं होती है, तो थोड़ी देर तक सस्टेन करते हैं फाइट पे और लगातार आप जो है पोक कर सकते हैं एनिमीज को और सेफ डिस्टेंस से कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखेगी पर्पल बफ की तरफ, यहाँ पे हंसो जाते हुए दिखे हैं और आई थिंक चुरा के निकल जाएंगे शायद से। जी बिल्कुल, और देखिए चुरा के निकल गए मौके का फायदा उठाते हुए। बहुत ही बढ़िया ये काम होता है एंजो का। डेफिनेटली बफ उनके पास वो पावर रहती है कि वो बफ लेके जा सकते हैं, बट इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये मेटा और ये जो रोटेशन है जंगल का वो आपको लेवल 4 ऐसे ही बना देता है विद द फर्स्ट ब्लड विद द एपिसम स्ट्राइक। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डायरॉथ की तरफ से विक्टीनी
ये लेंगे अपना पहला खून यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला है टीम एस इन्वोकर को, सॉरी S9 मॉरियंस को। एंड सामने की तरफ थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मतलब सहज मैं कहूंगा रखना चाहिए था यहाँ पे एलिटी स्पोर्ट्स को, बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। बट मुझे लग रहा है कि इसलिए फाइटर मेटा या यूटिलिटी जंगलर्स को यूज किया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम S9 मॉरियन, क्योंकि दूसरे सर्वर में खेल रहे हैं। दूसरे सर्वर में आप असैसिन खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैरमिला यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकफायर करती हुई, सामने से हैंजो यहाँ पर स्पिरिट बॉडी के साथ आते हुए क्या यहाँ पर टॉर्मेंट करेंगे, जरूर स्लेन करते हुए यहाँ पर उस दौरान पकीतो ने ट्रेड किया है टर्टल। अच्छी बात है, कैजुअलिटी के बदले एक टर्टल का ट्रेड। आई विल से कि दिस इज अ गुड वन। पक्ष, ओह माय गॉड, पीछे से बीट्रिक्स का बजूका फायर और पकीतो लेंगे फाइनल ट्रेड। बिल्कुल, और यही मैं बात कर रहा था आपको कि अर्ली गेम पे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अर्ली गेम पे आप जो है फाइट नहीं ले सकते इतनी ज्यादा। ये सामने की अगर बात की जाए ना, टीम अपनी जो है यहाँ पे मॉरियल्स है, उनके पास जो है अच्छा खासा एडवांटेज, उनके पास से हीरोज है जो बर्स्ट डाउन अर्ली गेम पे आपको बहुत अच्छा खासा कर पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक वेट किया जा रहा है अच्छा खासा फाइट लेने का। वहां पे टैंक आते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा पोजीशन रिवील करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। उसी के साथ वापसी की तरफ टीम जो है वो आती हुई दिखेगी इस समय। अब बात की जाए यहाँ पे कि किस तरीके से फाइट वो होती हुई दिखी, थोड़ा लेट गेम की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अर्ली गेम तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जरूर इनके पास रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है टर्टल पे जो फाइट होगी वो किस तरीके से होती हुई जाएगी, इंटरेस्टिंग रहेगी यहाँ पे। क्योंकि आप देखेंगे कार्मिला का अल्टीमेट यहाँ पे वैलेंटीना वो उठाती हुई जा रही है, तो एक तरीके से थोड़ा सा दाव आपके ऊपर उल्टा पड़ रहा है कि आपका लाइक बोलते हैं ना कि आपका जो वरदान है वही आपका श्राप यहाँ पे अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, देखते हैं 2-1 का ये स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिला है इस टीम S9 मॉरियन रॉयल्स को। बट फॉर द साइड ऑफ टीम एलिटी स्पोर्ट्स, क्या वो यहाँ पर कम बैक कर पाएंगे? उनके पास वो टर्टल का जो एडवांटेज है, मतलब एक तरीके से आप मैक्रो बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव उन्होंने छीना है। फ्लिक का यहाँ पर फोर्स आउट करते हुए हैंजो गोज इन देयर बट नीड टू रिकॉल बैक इनटू हिज बॉडी, क्योंकि थोड़ा सा जो है अंदर चले गए थे, टर्रेट की डैमेज भी आ रही थी। कैरमिला इज स्टिल प्रेजेंट, कैरमिला की अल्टीमेट भी प्रेजेंट है यहाँ पर वैलेंटीना के पास, कर्सर ब्लड, लेकिन उसको एक साथ यूज करना पड़ेगा प्रॉपर एओई के साथ। और ये देखिए यहाँ पर पकड़ते हुए क्लेम करेंगे यहाँ पर लेजेंड सेंसेई को, एंड दैट इज अनदर casualty for the side of team Elite Esports here with a 2-for-2 trade। यहाँ पर स्कोर इक्वलाइज करते हुए पकीतो goes in there, सरप्राइज अटैक यहाँ पर सीधा जो है स्लैम करेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे डबल किल सिक्योर करते हुए केनेथ एओजी प्रोडक्टिव वे से यहाँ पर यूज होता हुआ, लेकिन हीरो कम्स इन देयर, एरिक goes down, still happen on to Kazel, Victini will be the one getting the final blow। रिट्रीब्यूशन के इस्तेमाल स्लो डाउन किया है यहाँ पर हैंजो को, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं, और केनेथ को मिलेगा तीसरा किल इस पूरे फाइट का। 4 इसके बदले सिर्फ और सिर्फ 1 का ट्रेड। माय गॉड, टीम S9 मॉरियन, they are doing so well at this point। बिल्कुल, और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन पता क्या आ रहा है कि आपने टैंकीनेस तो उठा ली है, लेकिन आपने वैलेंटीना उठाया, आपने यूटिलिटी उठाया, जिसके कारण आपका जो बर्स्ट है वो गायब हो गया है, और आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फाइट के बीच में वो कर नहीं पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से रिप्ले की तरफ जाते हुए देखेंगे, पीछे से आया बर्स्ट यानी की तरफ से वो कमाल का, और ये देखिए डायराउट यहाँ पे घुसे, और ये देखिए पेनिट्रेशन कितना ज्यादा यहाँ पे पड़ा। लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ आर्मर वार्मर होगा, कुछ लाइक यहाँ पे कुछ भी डिफेंस वगैरह होगा, और एक के बाद एक फिर यहाँ पे जो है जाते हुए दिखे जिस तरीके से। और टायराउट का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, जब भी आपको 1-2 किल आप फाइट ले लेते हो ना, उसके बाद आपका हील जो है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। जितना ज्यादा आप सेकंड स्किल फर्स्ट स्किल मारोगे, आपका जो इनहैंस फॉर्म है बेसिकली वो बार बार चार्ज होता रहेगा, और ये बढ़िया बात रहती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अर्ली गेम पे तो आप बहुत बढ़िया खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे गेम जो है मिड से लेट गेम की तरफ आएगा ना, तो वहां से आपका गेम जो है थोड़ा सा मैं बोलूंगा डिटेरियोरेट होना स्टार्ट होगा, और वहां से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। टॉप लेन की तरफ वहां पे फाइट होती हुई दिखेगी, 2 बंदे वहां पे मौजूदा है, अंजो वहां पे मौजूदा रहेंगे, टायराउट यहाँ पे सर्वाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, तरफ जाते हुए देखिए डैमेज दिया है, हील करते हुए जा रहे हैं, और ये हील कमाल का आता हुआ डायराउट की तरफ से, अकेले सर्वाइव किया वहां पे 1v2, और उसी के साथ पीछे आते हुए जाएंगे। उसी के साथ बेट्रिक्स मौके का फायदा उठाते हुए टावर जो है बॉटम लेन का वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। किल भी उन्हें सिक्योर करने को मिला, एंड दैट्स ऑन टू द ऑब्सिडिया। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टीम S9 मॉरियल
वो कमबैक तो नहीं बल्कि डोमिनेट करती हुई दिख रही है, जिसकी बात मैं पहले से बोल रहा था कि लाइक ऑब्वियसली आपके पास जीरो होते हैं, आपके पास पकीतो है, लेकिन अगर आप रेगुलेट अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपको विन मिल सकती है। एओजी का यहाँ पर एग्रेसिव मूव करने के लिए गए थे, लेकिन खुद यहाँ पर फंसते हुए ट्रैप डाउन ऑन द मार्क, बट देखिए पीछे हटना पड़ेगा, वेंजेस पॉप आउट होगा और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर और सिक्योर कराया जाएगा टीम S9 मॉरन की तरफ से। टर्टल ऑन द मार्क, तीसरी टर्टल, और ये इजीली यहाँ पर सिक्योर करते हुए केनेथ। दो टर्टल यहाँ पर टीम S9 मॉरन के पास, एक यहाँ पर एलिट स्पोर्ट्स के पास, लेकिन स्कोर वाइज गोल्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी डेफिसिट मुझे देखने को मिली है टीम एलिट स्पोर्ट्स के ऊपर, एंड दैट इज काइंड ऑफ 2K, व्हिच इज नॉट एक्चुअली अ बिग वन, कैन गेट रिक्यूपरेट, बट एट दिस पॉइंट अगर रिक्यूपरेट करना है तो एक फाइट जीतनी पड़ेगी, और वो उतना आसान नहीं लग रहा है मुझे जिस तरीके से यहाँ पर खेल चल रही है। रिट्रीब्यूशन पॉप हुआ यहाँ पर, ब्लू बफ यहाँ पर छीन के भाग चुके हैं एंजो। डेफिनेटली रिट्रीब्यूशन था नहीं, कूल डाउन फेज में था, क्योंकि टर्टल का ट्रेड लिया था केनेथ ने, तो डेफिनेटली उसके कारण जो है उनको थोड़ा सा परेशानी भुगतनी पड़ी जब स्टील हुआ ऑन द ब्लू बफ। बट कोई मैटर नहीं करता, आप ब्लू बफ लिए हो, आइटम्स नहीं चुरा लिए हो या फिर उनके डैमेज को नहीं चुरा लिए हो, तो वो अगर कैंप करके हाइड करेंगे और 2 किल ले लिए तो कहीं ना कहीं वो उसको जो है इक्वलाइज कर देंगे उस ब्लू बफ स्टील को। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फाइट जिस तरीके से जा रही है, हम तो ट्राई कर रहे हैं भाई पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनको हर बारी रोक दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि उनकी बॉडी वहां पे खत्म कर दी जा रही है, जिसके कारण वो फाइट में ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे हैं। एक बात अच्छी यहाँ पे मैं बोलूंगा, इलाइट स्पोर्ट्स की यहाँ पे कोशिश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन टैगर होते यहाँ पे आएंगे अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, पीछे कसबल लगेगा, 3 बंदे पकड़े जरूर है, लेकिन मेज वो आएंगी डबल किल लेते हुए, जो आएंगी लेजेंड सन से कमाल का खेलते हुए, यहाँ पे हिचोरा वो दिखा रहे हैं कि क्यों ये हीरो बैन डिजर्व करता है। और इस समय देखिए कोशिश रहेगी, अंदर की तरफ गए हैं, डैमेज दिया जाएगा, स्टन मिलेगा, और यहाँ पे देखिए बस्ट आ सकता है। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है बेट्रिक्स ने, मिड लेन चुराने का यहाँ पे पूरा प्रयास करते हुए शॉटगन का इस्तेमाल किया, लेकिन एक शॉट यहाँ पे मिस किया, उसी के साथ पीछे हटेगी टीम और मिड लेन यहाँ पे टूटेगा, जिसके कारण जंगल जो है वो एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। एक चीज होता है जी हाँ, पॉज यहाँ पर मांगते हुए आप देख सकते हैं विक्टर ने पॉज मांगा है, मे बी बिकॉज ऑफ सम इंटरनल या फिर इंटरनेट इशू उनकी तरफ से आया है, इसलिए यहाँ पर S9 मॉरिन की तरफ से पॉज का जो है स्टार्ट हुआ है सिलसिला। बट बात करते हैं अभी तक गेम में क्या हुआ है। अभी तक गेम में ये हुआ है कि टीम एलिट स्पोर्ट्स उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, उन्हें उनके पास एक टर्टल थी, उनके पास एक किल थी, उन्होंने इक्वलाइज किया था, लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा किस तरीके से केनेथ और विक्टिनी एज वेल एज विक्टर, इन तीनों ने गेम को संभाल रखा है। बीच में हमने लेजिट सेंसे का भी डैमेज देखा ऑन द ट्यूटोरा। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से रोटेशन चल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एडेप्टेशन हो रही है इस मेटा और इस ड्राफ्ट की फ्रॉम S9 मॉरियंस की तरफ से, एंड द वे दे आर चैनलिंग आउट द डैमेज ऑन टू टीम एलिट स्पोर्ट्स, लिटरली रिमार्केबल मैं बोलूंगा। बट इसी तरीके से जो है आपको एंड तक काम करना पड़ेगा अगर आपको जीत चाहिए, एक स्कोर चाहिए आपके इस BO3 सीरीज के टैग लाइन पर, तो डेफिनेटली आपको कोशिश रचनी पड़ेगी। एलिट स्पोर्ट्स दे हैव बीन इन द टॉप 4, वो टॉप 4 में से एक है, वो जरूर हार गए थे वैलेंट गोल से, लेकिन उन्हें कम बैक करना पता है। दे हैव टेकन दैट गेम फॉर द सेकंड, आई मीन दे लॉस्ट इन विद 2-0 बट स्टिल दे ट्राइड देयर बेस्ट अगेंस्ट टीम वैलेंट गोल। सो आज परीक्षा तो है, लेकिन S9 मॉरियंस उसमें टॉप करती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और लाइक जिस तरीके से की अगर बात की जाए यहाँ पे कि देखिए उनके पास पूरी तरीके से पूरा पैकेज है, उनके पास बस्ट है, उनके पास डैमेज है, उनके पास पेनिट्रेशन है, उनके पास रेंज भी है, और साथ के साथ कार्मिला का आगमन वो कमाल का यहाँ पे सेट बैठ रहा है। इलाइट स्पोर्ट्स की तरफ से ना दिक्कत क्या हो रही है कि इलाइट स्पोर्ट्स पूरी तरीके से लेट गेम की तरफ चली गई है, जिसके कारण अर्ली गेम उनका बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, और उसके साथ साथ अगर मिड लेन पे कुछ बस्ट वगैरह होता ना, तो यहाँ पे 2 फ्रंट लेनर जो है थोड़ी सी बोलूंगा सेंस भी बनाते हैं आपके अच्छे लिए। मैं बोलूंगा अभी भी इलाइट स्पोर्ट्स का ड्राफ्ट बुरा नहीं है, बट वो लेट गेम सेंट्रिक है बहुत ज्यादा। आपने 2 बंदों के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि आपने बोल सकते कि पूरी अपनी नैया जो है इन दोनों के कंधे पे छोड़ दी कि भैया आप जो है पार कराएंगे। एक रहेंगे यहाँ पे हांजो और दूसरे हैं यहाँ पे अपने MM, यानी कि
ऑब्सीडिया, इन दोनों के ऊपर, और इन दोनों को ही फार्म होने में कम से कम मिड से लेट गेम का समय तो लगेगा। हंजो कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी वो फाइट लेने के लिए जाते हैं उनकी बॉडी को स्टन मिल जाता है, पीछे से इतना डैमेज आ जाता है, बर्स्ट आ जाता है कि बॉडी फाइट ज्वाइन करने से पहले ही वहां पे डिप्लीट हो जाती है उनकी सारी एनर्जी, फिर उनको वापस आना पड़ता है, फार्म करके अपनी हेल्थ बढ़ानी पड़ती है, फिर दोबारा से यही जब तब चल रहा है। लेकिन इसी बात का फायदा यहाँ पे जो है S9 मॉरियंस वो उठाते हुए टरेट पुश कर रही हैं। अब देखिए मिड का टरेट यहाँ पे पुश कर दिया उन्होंने, जिसके कारण यहाँ पे जो है पूरा जो एक्सपेंशन हो गया जंगल का वो हो गया है आराम से। रोटेशन की बात करें, रोटेशन आप देखिए जिस तरीके का आ रहा है टीम्स का, वो भी काफी अच्छी तरीके से आ रहा है। आई थिंक मिड लेन पे अगर थोड़ा सा चेंजेस होता ना, कि लाइक मिड लेन पे अगर आपको यूटिलिटी की तरफ जाना ही था, आप थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि मेज कोई दूसरा उठाते, ज़ेथियन वगैरह ले सकते थे। अगर ज़ेथियन नहीं लेते तो ज़ेवियर भी चल सकता था यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। अगर ज़ेवियर नहीं जाना था, तो आप कोई दूसरा मेज उठा सकते थे, फारसा उठा सकते थे, या कुछ ऐसा रेंज वाला हीरो उठा सकते थे, जिसके कारण आपके पास एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा रेंज से साथ-साथ डैमेज भी पड़ता। तब आपके जो है फ्रंट लाइनर आगे की तरफ डैमेज लेते हुए जाते, पीछे से आपका बर्स्ट आता, तो टीम फाइट आपकी जो है कंप्लीट हो जाती यहाँ पे। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर S9 मॉरियंस की तरफ से हुआ है, जिसके कारण वो मोर देन 5 मिनट्स टाइम ले रहे हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली उनको स्क्रीनशॉट भी दिखाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का, क्योंकि जब आप मोर देन 5 मिनट्स अगर टाइम लेते हो, डेफिनिटली कुछ बड़ा-सा चीज़ होता है, बट सामने वाली टीम को भी रिलायबिलिटी चाहिए होती है। बट यहाँ पर एलिट स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, oh, तैयार मिंजे coming in for the zone right now, and we're gonna see that hand again. That is the attack. Oh my goodness, this is what needed right now. Mauryans know कि उनके पास डैमेज है, वो आतंकित तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सीधा जो है स्वर्ग द्वार में भेज देंगे यहाँ पर मिंजे को, और उसी के साथ लॉर्ड की तैयारी यहाँ पर करती हुई टीम S9 Mauryans. No way to stop them at this moment. एरन आए थे, अरे ने रोका यहाँ पर मिंजे का जोन। मिंजे आए थे यहाँ पर दिखाने के लिए विजन, लेकिन खुद जो है विजन बन गए यहाँ पर अपने टीम के लिए कि आगे नहीं बढ़ना है भाई। मॉरियंस तैयार है, मॉरियंस तैनात है आज। ये और रॉयल्स नहीं है, आज से S9 सेक्टर 9 मॉरियंस है ये। वो रॉयल्स वाली पीरियड तो गई, यहाँ पे अभी वो दिल्ली सेक्टर वाली पीरियड आ गई है उनमें। आज से भाई मारधार चालू हो रहा है यहाँ पर S9 मॉरियंस की तरफ से। 11-3 का ये स्कोर शिंद्रा। They have a proper 6k goal lead यहाँ पे। और इसका मतलब समझ सकते हो, मिंजे going in for the engage with the AOG, but at this point Moss will secure out the hands of backline पे गए Kenneth, but Kenneth को मिलेगा यहाँ पे shutdown of CDA with the ultimate. What a way to finish it up. जंगलर के बदले जंगलर, बहुत ही बढ़िया। बट आपकी टर्रेट यहाँ पर जो है बिखरने वाली है। लॉर्ड की यहाँ पर आगमन towards LT Sports bot lane. बिल्कुल, और यहाँ पे मतलब जिस तरीके से मिंजे को खत्म किया था, लाइक जिस तरीके से जो आर्मर पेनिट्रेशन की मैं बात कर रहा था, उनको अल्टीमेट यूज करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि स्टन इतना ज्यादा था। उसके बाद डायरॉथ का जैसी वो आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ा, उसके बाद डैमेज आप नोटिस करेंगे जिस तरीके से वहां पे गायब किया उनका एचपी। और ये देखिए बेट्रिक्स का हमला होता हुआ, ओ फुल एचपी से सीधा यहाँ पे 20% एचपी में छोड़ दिया है। मिड का टरेट बचाने का प्रयास करेंगे, कस ब्लड का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे आने का प्रयास, अल्टीमेट लगाया था इडोरा ने, लेकिन रेज के थ्रू यहाँ पे बस हो जाएंगी। वो सुपर चार्ज यहाँ पे सुपर कंडक्ट वो यहाँ पे लगा नहीं था, अगर ढंग से लगा होता तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एओई थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ टीम जो है वापसी करती हुई आएंगी, लेकिन मैं बोलूंगा अभी भी यहाँ पे जो है S9 मॉरियल उनकी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस मैच को अपनी तरफ खींचा गया है और उसको मेंटेन करती हुई जा रही है। फार्म डिफरेंस की बात करें तो अभी 6k का फार्म डिफरेंस चल रहा है, ऑलमोस्ट 7k यहाँ पे हो जाएगा। और उसके साथ साथ अब आइटमेशन की तरफ यहाँ पे नजर डालते हुए देखेंगे। और ये देखिए प्योर पेनिट्रेशन बनाया हुआ है डायरॉथ ने, उसके साथ साथ हीलिंग के लिए यहाँ पे एंटी हील का इस सहारा लिया है। और रोज गोल्ड बहुत बढ़िया चलता है भाई डायरॉथ के साथ। जो हील आता है रोज गोल्ड से, बेसिक पे भी आपके हील आता है, उसके ऊपर से जब आपका इनहैंस बढ़ता है बेसिक अटैक तो वहां पे भी हील मिलता है। ऊपर से वो शील्ड इतनी मिल जाती है कि आपको आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। पीछे की तरफ जाते हुए देखिए अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, ओके ओजी का इस्तेमाल करके भागना पड़ेगा वापिस मिंजे को। और उसी के साथ जो टीम है वापसी तरफ आती हुई जाएगी, लेकिन लेन अभी भी क्लियर आउट नहीं किया। लेन को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है।
ताकि जो मिनियंस के थ्रू जो गोल्ड जाता है वो पूरी तरीके से डिनाई किया जाए। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, कोशिश रहेगी। डोरा आएंगे अंदर की तरफ, डैमेज देने का प्रयास, कर्स ब्लड लगाया जरूर है लेकिन मिस करेंगे। यहाँ पे हांसो अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे, डैमेज देने का प्रयास, बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया जाएगा लेकिन बॉडी उनकी फिनिश ऑफ कर दी जाएगी। वेंजर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आते हुए देखेंगे, अंदर की तरफ से डैमेज देने का प्रयास, लेकिन पीछे से यहाँ पे पगीतो आएंगे और उनकी तरफ से अपर कच लगाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा कॉम्बो मिस हुआ और टीम जो है वापसी की तरफ लॉर्ड लेने के लिए आ जाएंगी। और यहाँ पे अच्छा मौका रहेगा फटाफट से लॉर्ड लेने का, क्योंकि टीम को अभी रिकॉल करना पड़ा है। उसके साथ साथ वापसी की तरफ आते हुए दिखेंगे, लेकिन लेन देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पे चलती हुई जा रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे डिफेंड करने के अलावा। Your ultimate was in a cooldown and that's the reason you couldn't manage to engage back into the team fight, जिसके वजह से अभी लॉर्ड के पास भी जो है एडवांटेज रह सकता है। बट लुक एट इट, यहाँ पर काइजल आते हुए फॉर द जोन, हीरो कमिंग इन विद द स्पिरिट बॉडी एंड विल गेट इंस्टेंटली मेल्टेड डाउन देयर। कॉल बैक कर दिया है वहां पर इजी लॉर्ड यहाँ पर विक्टर के लिए। S9 Mauryans, no way to give any chance for Elite Esports for the comeback in the game number 1. तो जिस तरीके से अगर ये गेम दिल्ली सर्वर में चल रही है एलिट स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे वाली गेम जो है वो बंगाल में होने वाली है। तो अगर दिल्ली पे ऐसा सीन बन रहा है टीम S9 Mauryans का, तो जब उनकी सर्वर आएगी तो उनके पास और ज्यादा जो है ताकत रखने का चांसेस रहेगा। तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ती हुई दिख रही है मुझे S9 Mauryans की। मिनियंस वेव्स यहाँ पर चैनल आउट करते हुए, साथ ही साथ लॉर्ड के पास एक अच्छी सी रोल यहाँ पे रहेगी, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंक कर रही है टीम। ओह माय गॉड, हीरो के पास कोई चांस नहीं था टू गेट हिज बॉडी बैक इनटू द सेफर साइड एंड नाउ दे हैव टू गो फॉर अ 4v5 विद द लॉर्ड इनटू द हैंड ऑफ S9 Mauryans। और ये देखिए लॉर्ड आगे बढ़ती हुई मिनियन वेव्स को क्लियर किया है। ऑल इन ऑल जाने वाले अंदर, पहले बजूका फायर, फिर इनहिबिटर तोड़ते हुए यहाँ पर एक्सपोज किया है नेक्सस को। होली हिल आता हुआ यहाँ पर विक्टर गोज डाउन। A beautiful comeback coming in, reconciliation kill for them, double kill secured. Vitosnacha goes down, it's a triple for Kenneth. Oh my goodness, he goes down, it doesn't matter. ट्रिपल लेके यहाँ पर गोज डाउन हुए हैं। एक मीनियन की बड़ी वेव आप देख सकते हैं, कैनन मीनियन अंदर जाते हुए हीरो यहाँ पर रीसेलेक्ट बैक किए और आते ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एरन को डाउन करते हुए पीछे हटेंगे जरूर, लेकिन सक्सेसफुली डिफेंस यहाँ पे कर ली है टीम एलिट स्पोर्ट्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि मैच खत्म होने को आ चुका है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी राहत की सांस। बिल्कुल वहां पे थोड़ा सा मिनियंस की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मिनियंस बहुत ज्यादा इस समय पीछे की तरफ आना पड़ेगा। डायरो तभी भी वहां पे मौजूद रहेंगे, ही लेके किस प्रकार से आए, लेकिन 4 बंदों के बीच में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको निकलना पड़ेगा वहां से। लेकिन डायरो अकेले जुड़े हुए हैं, शटडाउन मिलेगा। फाइनली डायरो जाते हुए जाएंगे पीछे की तरफ और उसी के साथ एलिट स्पोर्ट्स दूसरा दिन मिलेगा उनको यहाँ पे जीने का, लेकिन स्थिति उनकी भी बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं हुई है। गोल डिफरेंस की बात करें वो अभी भी यहाँ पे ज्यादा रहेगा। एमएम के ऊपर प्रहार होता हुआ जाएगा, एमएम यहाँ पे देते हुए जाएंगे विक्टर की तरफ से, विक्ट्री के लिए आगाज फिनिश ऑफ करेंगे यहाँ पे अपनी जो ऑब्सीडिया थी उनको, उसी के साथ डैमेज देते हुए जाएंगे। दिक्कत हो सकती है, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया परंतु बचते हुए निकले यहाँ पे। और जिस तरीके से यहाँ पे फाइट चल रही है वो कमाल की यहाँ पे चल रही है एसटीजी। और देखिए लॉर्ड का आगमन होने वाला है कुछ देर में, तो टीम वेट कर रही है, बस लॉर्ड के लिए जाएंगी यहाँ पे। लेकिन मिनियंस देखिए आप किस तरीके से जमा होते हुए लगातार जा रहे हैं, और यहाँ पे एलिट स्पोर्ट्स उनके पास कोई चारा नहीं है बेस पे रह के डिफेंड करने के अलावा। अभी देखिए आपके सारे इनहिबिटर्स टूट चुके हैं, आपकी पूरी नेक्सस एक्सपोज्ड है, और अभी आपको पहले मिनियन क्लियर्स करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा लॉर्ड के पास। और लॉर्ड के पास अगर आप देख रहे हो तो वो भी एक गैम्बल रहेगा, आपके पास आपकी एमएम नहीं है। हर एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो घेरी गई है यहाँ पर एलिट स्पोर्ट्स, उनके पास कोई मौका नहीं टू कम बैक, टू क्लिंच बैक। और 10 की का गोल लीड जब लग जाता है ना, तो फिर आपको पता है भाई क्या सीन है। सीन ऐसा है कि एलिट स्पोर्ट्स अगर जीत रही है, अगर सर्वाइव कर रही है, बट व्हाट जस्ट हैपेंड देयर, अ टीम फाइट जस्ट गॉट टेकन आउट and we can see the Eudora goes down, but that Pinjay falling in, Victini goes in for the Abyssin strike, Kenneth with Kaisel's kill. My goodness, एक किल के बदले 2 ट्रेड यहाँ पर निकालती हुई टीम Mauryans doing so fabulously good at this point। और ये देखिए लॉर्ड के ऊपर अभी आगाज, काइजल, my God, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मिंजी एंड हिम, both of the front liners
they couldn't manage to sustain the damage coming in, but यहाँ पर हीरो कोशिश थी एक छोटी सी की retribution जाकर लग जाए और हम एक क्लस्टली करने की कोशिश करें, लेकिन it's not easy when the Beatrix is guarding the way. बिल्कुल। और यहाँ पे जिस तरीके से विक्टीनी खेल रहे हैं, लाइक वो कमाल का, उन्हें पता है कि ये किस तरीके का यहाँ पे डायरोथ कितना ज्यादा डैमेज लेगा और कितना ज्यादा उनका जो बेसिकली सेकंड स्किल है ना, वो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि यूजफुल है इस समय ऐसे कॉम के सामने, जब आपके सामने जो है ऐसे जो है टैंकी हीरोज आते हैं और उन टैंकी हीरोज को लाइक मेल्ट डाउन करने के लिए वो अपने पैसिव का भरपूर रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तो साइलेंटली मैं बोलूंगा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जाते हैं पीछे मार्क करते हैं स्क्विशीज को, उनको डैमेज देते हैं, फिर पीछे की तरफ आते हैं। तो लाइक ओवरऑल देखे जाए तो टीम बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही है। लॉर्ड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पीछे से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे विक्टर, उनसे कैसे बचेंगे आप? कोशिश रहेगा जाने का, प्रयास यहाँ पे कर्स ब्लड का इस्तेमाल, लेकिन नहीं, विक्टर डबल किल ट्रिपल किल के लिए जाना चाहते हैं, शॉटगन का इस्तेमाल इस तरह के, और उसी के साथ फ्रीडम ऑफ नेचर का इस्तेमाल किया, और ये देखिए शॉटगन का इस्तेमाल किया था, लेकिन चेंज करते हुए जाएंगे बेस के ऊपर फरार और विक्ट्री यहाँ पे लेते हुए जाएंगे विक्टर्स के साथ से अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेते हुए। इजी विक्ट्री मैं कहूंगा फॉर द साइड ऑफ टीम एस्टा एंड मॉरियंस। इतना ज्यादा इसके लिए उनको तवज्जो करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेजिस्टेंस से अकेले रहेंगे सिल्वर के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला यूडोरा के मिड लेन में, बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टन दे रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने एक फॉलो अप दिया था अपनी टीम के लिए, वो डेफिनेटली जरूरत था। एंड यहाँ पर MVP जाएगा विक्टिनी को ऑन टू दैट डेरॉथ 419, एक ही बार वो डाउन हुए थे, एंड दैट टू ऑन द टॉप लेन जब उनके ऊपर एक ट्रैप डाउन हुआ था। उसके अलावा ही प्लेड सो वेल भाई, लाइक इन ब्लेंडिंग इनटू द मेटा, मैं कहूंगा ब्लेंडिंग इनटू द मेटा, एंड ही लिटरली डिड इट। मुझे यहाँ पे एक चीज बस लग रही है कि ऑब्सीडिया की जगह अगर मेलिसा होती तो शायद से गेम कुछ अलग होता है एलिट स्पोर्ट्स के लिए। या मेलिसा डू वर्क इन द मेटा, एंड मेलिसा कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेंड कर सकती थी, आई मीन नॉट ब्लेंड बट की ट्रेड कर सकती थी सामने वाले टीम को। पकी तो पहुंच नहीं पाते, आपके पास वो अल्टीमेट का रिपल्शन रहता है तो वो आप यूज कर सकते थे, पकी तो आपके पास इजीली नहीं कैच कर सकते थे। ये सारी चीजें थोड़ा सा बदल सकता था इफ द ड्राफ्ट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट अभी ये आखिरी मैच हो सकता है इफ टीम एलईडी स्पोर्ट लूजेस है, बट ये आखिरी मैच नहीं हो सकता और तीसरी मैच जा सकता है अगर एलईडी यहाँ पर जीतती है। थोड़ा चुनौती भरा मैच रहेगा क्योंकि सर्वर जो है वो अभी मॉरियंस के हाथों में रहेगी, वो सेकंड पिक पे खेलेंगे, फर्स्ट पिक यहाँ पर रहेगी एलईडी स्पोर्ट्स की। तो जो पिछली बारी की गलतियां है क्या उसको दोहराएंगी या फिर कुछ मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ अनोखा हीरो तो नहीं लिया था, दे वेयर ऑन टू द मेटा। डेरोथ लिया है तो क्या आप डेरोथ बैन करोगे, तो क्या आप कैरमेला बैन करोगे, तो क्या आप बीट्रिक्स बैन करोगे? ऐसा कुछ अनोखा हीरो तो नहीं था जो मतलब सच में इम्पैक्टफुल था। इवन द यूडोरा वाज नॉट दैट मच इम्पैक्टफुल इनटू द टीम फाइट, तो आप यूडोरा को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो ब्लेम मैं यहाँ पे बोलूंगा पकीदो जंगल सोच आया मॉरियंस के ब्रेन में, तो डिफरेंटली वो लोग रीच आउट किए इनटू द गेम, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास सर्वर नहीं है, आप लैंसलॉट नहीं खेल सकते एट 40 और 45 ms, तो उन्होंने पकीतो जंगल चूज किया एंड बहुत ही बढ़िया खेला केनेथ ने पकीतो जंगल के साथ। मैंने बहुत बार देखा है बहुत लोग पकीतो जंगल ले तो लेते लेकिन खेल नहीं पाते सही से, कि पकीतो जंगल इज नॉट लाइक आप सीधा एंगेज कर लिए, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, और उसका वेट बखूबी से किया है केनेथ ने। डबल ट्रिपल वाज अबाउट टू पिक द मैनियक बट कुडंट, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। एस्टा एंड मॉरियंस आर इन द लीड एंड दे डिजर्व द लीड। बिल्कुल, और इसी के साथ जो दूसरे मैच की तरफ हम बढ़ने वाले कुछ देर में यहाँ पे आई थिंक लाइट स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हुए लाएंगे, ड्राफ्ट के ऊपर काम करते हुए आई थिंक कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ड्राफ्ट के बीच में भी। और कहीं ना कहीं जैसे ये आपने बोला था कि यहाँ पे मेलिसा अगर आती तो अच्छा रहता है, बिल्कुल मेलिसा का अल्टीमेट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा डिफेंस प्रोवाइड करता है, शील्ड भी देता है, उसके साथ साथ लाइक जितने भी मैली हीरोज हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कि डायरोथ हो गए वो सेकंड स्टेज से नहीं जा पाएंगे, और लाइक जितने देर में वो वहां से निकलना चालू करेंगे उतनी देर में ही वो मेल्ट डाउन वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, और तो वो अच्छी स्थिति यहाँ पे रहती कहीं ना कहीं। और मेलिसा भी बात भी की जाए तो मेटा पे काफी अच्छी तरीके से चल रही है, और
थोड़ा सा अगर देखा जाए तो चेंजेस जरूर होते हुए हमें दिखेंगे। आई थिंक थोड़े से मिड लेन की तरफ में चेंजेस आता हुआ दिखेगा इस बार। आई थिंक दूसरा जो मिड लेनर है वो कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिखेगा ईएक्सपी के तौर पे। वहाँ पे लेट्स सी कि किस तरीके से चेंजेस यहाँ पे रहेंगे, क्या यूरेनस को बैन किया जाएगा या नहीं, और ईएक्सपी पे फिर क्या आगमन होता हुआ हमें दिखेगा। जी, सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक। आते हैं जल्दी और सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। देखना चाहूंगा कि एलिट स्पोर्ट्स कमबैक करती है या फिर विद अ क्लीन स्वीप कंप्लीट करेगी इस दूसरे गेम को S9 Mauryans। वापस आ चुके हैं हम लोग टेस्ट पे। मैं एसटीजी में साथ रहेंगे शिंडा फॉर द मोपा वार्मअप क्लास सीरीज पावर्ड बाय एल्गैम्बो esports। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एल्गैम्बो को, जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे फैमिली का हिस्सा बनना नहीं चाहते तो फिर क्या कर रहे हो गाइस। बन जाओ फैमिली का हिस्सा। फैमिली का हिस्सा बनने पर आपको पाइज मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, चोको पाई। I mean, this is real, guys. Choco Pie in the sense like you will get some exciting giveaways in some upcoming tournaments of Algambo Esports, which will be announced soon in our Discord server. So you have to join the Discord server as well
to get some information about it, and do not forget to follow the Instagram handle, क्योंकि वहाँ पर भी आपको information मिलेगा. जहाँ से भी आप information gather करना चाहते हो, you can join Insta, you can join Discord, but Discord पे website की भी link है. YouTube में भी हमने website की link दी है to register yourself for the Tuesday Scrim. जी हाँ, 5 दिन की Scrim हो रही है हर हफ्ते. अभी पहले 2 दिन की होती थी, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन से अभी 5 दिन गाइस. तो डेफिनेटली आप लोग अगर अपनी टीम के साथ खिलवाना चाहते हो एट द स्क्रिम्स, क्योंकि मैंने देखी है बहुत सारी टीम जो यहाँ पे स्क्रिम खेल रही है, उनका ग्रोथ, कि रेगुलर स्क्रिम आप जब खेलते हो तो आपको एक नॉलेज आता है ड्राफ्ट का, आपको एक नॉलेज आता है रोटेशन का, क्योंकि द स्क्रिम इज काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम रैंक. शिंडा, विल यू एक्सप्लेन इट हाउ इट इज डिफरेंट देन रैंक? क्योंकि हम लोग रैंक खेलते हैं बट हम लोग कास्ट करते हैं इन टूर्नामेंट. वी नो कि टूर्नामेंट एंड रैंक में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है. एटलीस्ट कोई है ना भी लेके पता तो नहीं. बिल्कुल. देखिए यहाँ पे ना लाइक रैंक्स में आपको हर तरह के प्लेयर्स मिलेंगे. इवन आप 5 मैन में भी जाओगे ना, तब भी वहाँ पे कैजुअल प्लेयर्स जो है वो भी आते हैं रैंक्स वगैरह खेलने के. तो वहाँ पे भी 5 मैन में भी रैंक ऐसे वैसे प्लेयर आते रहते हैं. टूर्नामेंट से डिफरेंट यहाँ पे इसलिए रहता है क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट यहाँ पे खेलता है, मेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे खेलते हुए जाते हैं. रोटेशन अलग होती है पूरी की पूरी. रैंक और टूर्नामेंट का अगर आप कोई भी एक जो है गेम उठाते हुए देखोगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा कि किस तरीके से वहां पे प्लेयर्स का रोटेशन आता है, उनका फार्म किस तरीके से होता है. लाइक हर एक छोटी से छोटी चीजों में लेन फ्रीजिंग आप देख लो, किस तरीके से लेन फ्रीजिंग करते हैं. लॉर्ड लेने के बाद लेन सिंकअप किस तरीके से किया जाता है. उसके बाद गैंग अगर कर रहे हैं तो वहां से गेम किस तरीके से पलटता है. और लाइक कभी कभी तो ऐसा भी होता है इस चीज में कि जो टीम पूरा डोमिनेट करती हुई जा रही है एक तरफ से, एक छोटी सी गलती होती है और वहां से गेम पलट जाता है. जो टीम हार रही थी वो फिर एकदम से जीत जाती है. और ये सब पॉसिबल किस लिए होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब टीम जो है वो टूर्नामेंट्स वगैरह खेलती है, स्क्रीम्स वगैरह खेलती है, वो अपने एक्चुअली 2 चीजों पे काम करती है बेसिकली. एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो. और इन दोनों को स्ट्रॉन्ग जो है वो हेल्प करता है बनाने में, वो है स्क्रीम्स. आपके नए नए जो स्ट्रेटेजीज है उनको रियल लाइफ, मतलब यहाँ पे रियल लाइफ में यहाँ पे अगर बात करें टूर्नामेंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए, वो हेल्प करता है आपको स्क्रीम्स. क्योंकि स्क्रीम्स में ही आपको खेल के आइडिया मिलता है कि आपकी जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि जो फॉर्मेशन है वहां पे सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है. देखिए बहुत अलग चीजें होता है कि थ्योरी पे तो आप बोल दो कि हाँ ये उठा लेते हैं, बहुत बेस्ट पिक है. लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है ना भाई उस चीज का, और एग्जीक्यूशन जब आता है, तब आपको पता लगता है कि ओ ये ऐसा भी हो सकता है. मेरे को तो ये लगा था. बिल्कुल. और ये देखिए यहाँ पे अल्फा आता हुआ दिख रहा है इलाइट स्पोर्ट्स की तरफ से. ये थोड़ा सा अलग हो गया है यहाँ पे एसटीजी. और मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है. दोनों तरफ से कुछ ना कुछ अलग हुआ है. नाना इनटू द मिड फॉर S9 Mauryans एंड अल्फा यहाँ पर आया है काइजल के हाथों में. तो डेफिनेटली कुछ अलग सा सीन चलने लगा है यहाँ पर एलीट की तरफ से, क्योंकि हिरारा जो है वो तो जंगल पे आप हीरो को दे ही रहे हो, बट अल्फा का समझ मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है. मोस्टली अगेंस्ट द बराट्स, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पसंद आता है कि आप एडिथ खेलो, माशा खेलो. बराट्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट ऑप्टिंग इट, कि डेफिनेटली काउंटर है बराट्स का. बट नो, अल्फा यहाँ पे 2 डैमेज. बट यू नो कि आपके पास भागने के लिए सिर्फ एक फ्लिकर रहेगा. अगर आप जा रहे हो, रेंजर्स जा रहे हो, तो फिर भागने के लिए और फ्लिकर भी नहीं रहेगा. जस्ट द स्फीयर ऑफ अल्फा. उसके अलावा आपके पास भागने के लिए कुछ नहीं. एंड दिस इज व्हाई अल्फा इज काइंड ऑफ वल्नरेबल इनटू दिस मेटा. बट हाँ, मिथिक ऑनर के बाद अल्फा को एक छोटा सा बफ मिलता है जिसमें अच्छा खासा काम चलता है. I'm not sure how it goes against this Barracks into a lane to lane matchup. बैन साबर आता हुआ मिड लेन पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश S9 Mauryans की तरफ से. बैनिंग द वैलेंटीना, दे हैव ऑलरेडी बैन द ज़ीटियन. गोलियन की तरफ से यहाँ पर बीट्रिक्स को बैन कर दिया गया है. नाउ ऑन द क्लॉड एज वेल. एलीट स्पोर्ट्स दे आर टेकिंग इट सीरियसली. पिछली बार डिरॉथ EXP, इस बार अल्फा EXP, दोनों को बफ मिला है आफ्टर मिथिक ऑनर. सो लेट्स सी गाइस व्हाट विल बी हैपनिंग. फोर्थ पिक कमिंग इन. जंगल पे यहाँ पे खेलेंगे ईशन चिन, S9 Mauryans, Kenneth onto that ईशन चिन. और सामने यहाँ पर हैना भी. I was actually expecting it, क्योंकि हैना भी अगर आप देखोगे अच्छे से अगर खेला जाएगा इस मैच पे, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उनके पास मौजूद है काजा and they're going with a कदीता. पिक ऑफ प्लस बर्स्ट. क्या लग रहा है सिंड्रा, किस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है यहाँ पर एलिट स्पोर्ट्स का? डू और डाई गेम.
देखिए अब डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कडिता के अलावा अगर यहाँ पे अरोरा रहता तो वो ज्यादा बेटर मेरे को लगता भाई, कि काजा एंड अरोरा इन दोनों का कॉम्बो आप कभी भी नोटिस करोगे ना यार, बहुत ब्रोकन कॉम्बो है। लाइक मैंने खेला था एंड इट्स लाइक ना, काजा आपको मतलब अपने अल्टीमेट से निकलने नहीं देगा, पहले आप लॉकडाउन हो गए हो, उसके अलावा अरोरा का एक फुल कॉम्बो पड़ेगा ना, खुशी तो तुरंत खत्म हो जाते हैं भाई बैकलेन में। उसके बाद जो बच्चे कुचे हैं, अरोरा का सेकंड स्किल दोबारा आ जाता है इतनी देर में कि वो आराम से आपको जो है दोबारा से मार के स्लो डाउन कर दे। अगर वो अरोरा नहीं मार पाई तो बैकलेन पे एमएम है आपका जो इजीली वहां पे मार पाएगा। और ओवरऑल यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि डिपेंड इस तरीके से रहेगा कि काजा किस तरीके से अल्टीमेट लगाते हैं अपनी टीम के लिए, किस तरीके के वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। वाईएसएस उनके पास अल्टीमेट रहेगा, जिसके कारण एक एडवांटेज उनके पास ये रह सकता है उनकी टीम के पास कि इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे टीम S9 मॉरियंस के पास यहाँ पे रहने वाली है, जिसके कारण जो एम्बुश है काजा का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि EXP पे बराट्स आए, उनके अगेंस्ट पे आप मार्शा जा सकते थे, डायरॉथ भी यहाँ पे जा सकते हैं, डायरॉथ भी बहुत अच्छा काउंटर है यहाँ पे अगर बात की जाए बराट्स की। तो उसके साथ साथ नाना का एडिशन हुआ है। नाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक बोल सकते हैं कि हिरारा को बुली करने के लिए लिया गया है, क्योंकि अगर सेकंड स्किल यहाँ पे पड़ता है हिरारा जब भी अगर इंगेज करने के लिए आएंगे तो वहां पे उनको पनिश किया जा सकता है। तो लेट्स सी किस तरीके की जो स्ट्रेटेजी वो होती हुई दिखेगी, किस तरीके की जो है अर्ली गेम रोटेशन वो आते हुए दिखेगी। देखिए हिरारा के साथ सबसे बड़ी मैं बोलूंगा आपके पास ऑप्शन ये रहता है, जबकि उनका लेवल 2 होता है तो आप जो है यहाँ एक एडवांटेज में रहते हैं। तो उस एडवांटेज का फायदा तभी होगा जब आप इन्वेट करके खेलेंगे सामने या अर्ली गेम पे जो है किल्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया जोनिंग यहाँ पर काजा की तरफ से, तुरंत भाप लिया कि हाँ यहाँ पर और ग्रामर जो है वो है नहीं, तो उसके लिए जाकर कोई फायदा भी नहीं होगा। और ये देखिए S9 मॉरियंस आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। उनके पास सबसे फास्ट जंगलर है, दैट इज द ईशन शिन, एंड दैट्स व्हाई जल्दी से जल्दी लेवल 4 करके आपको जो है मैक्रो के ऊपर अपना नजर रखना पड़ेगा। बट रीसेट किया है यहाँ पर लावा गोलेम को, थोड़ा और टाइम अपने टीम और अपने जंगलर को देते हुए टू गेट द लेवल 4 मार्क बिफोर केनेथ विल। ये अच्छी स्टार्ट में कहूंगा फॉर एलीट स्पोर्ट्स इन डू और डाई गेम, क्योंकि अभी तक डिफेंसिव खेला है, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं, इतना ज्यादा जो है आप बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज बेट नहीं करवाया अपने तरफ से। आप देख सकते हैं फ्लिकर भी मौजूद है यहाँ पर, मिंजे का एजेस भी मौजूद है यहाँ पर के गोल इनर और गॉड का। देखते हैं क्या होने वाला है भाई। अभी तक इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हैं किल रेशियो तो मुझे नहीं दिख रहा है फ्रॉम S9 मॉरियंस, बट आई डोंट नो हाउ इट गोज इन द लेट फेज। डैमेज आउटपुट ऑब्वियसली एलीट स्पोर्ट्स का ज्यादा है, सर्वाइवेबिलिटी वाइज यहाँ पर S9 मॉरियंस बहुत अच्छा रहेगी। टर्टल के पास यहाँ पर एक्यूमुलेशन आप देख सकते हैं, 4-man रोटेशन कमिंग आउट ऑफ द टर्टल पीट, और टर्टल पिट के पास जब आप 4-man रोटेशन से कवर अप कर लेते हो, बट नो मिंजे is coming in for the zone. He knows कि उनके पास वो पैसिव है, but hit यहाँ पर retribution sphere of alpha के साथ आगे बढ़ते हुए engage करने की कोशिश थी, लेकिन no, that will be the turtle for S9 Mauryans. बढ़िया कोशिश यहाँ पे, और उसी के साथ फर्स्ट ब्लड बढ़िया तरीके से गए। अब आशा नहीं था हमने वहां पे कि उनके ऊपर फरार हो सकता है, और उसी के साथ फरार हुआ। मौके का फायदा उठाते हुए वो खेल लेते हुए जाएंगे। कमाल का प्रदर्शन आता हुआ यहाँ पे, और कडिता अर्ली गेम में थ्रेड बनती हुई अच्छा खासा मौका मैं बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आउट करने का प्रयास किया। वो टर्टल जरूर गया, उसके बदले एक किल यहाँ पे जरूर मिलेगा। ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे आप टर्टल के पास ट्रेड नहीं निकाल सकते, तो बेटर यू विल ट्रेड आउट इट विद अ कैजुअलिटी फ्रॉम द टर्टल विनिंग साइड। तो वही किया, और उनके कैरी को टेक डाउन किया वहां पर, एक आप बोल सकते हैं बैकलाइन कैरी को, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द साइड ऑफ टीम एलीट स्पोर्ट्स। 1 for none का स्कोर, 1 for none का वो हारा है उन्होंने मैक्रो ऑब्जेक्टिव पे। यहाँ पर रोटेशन आता हुआ आप देख सकते हैं किस तरीके से गार्ड कर रहे हैं यहाँ पे अभी एरन। उन्हें पता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है विक्टर को ऑन टू दैट मिया, क्योंकि दिस कदीता इज एक्चुअली हंटिंग डाउन द मिया फ्रॉम दैट वे, तो उसको रोकना पड़ेगा उन्हें। अगर मिया डाउन होता रहा, हैना भी अप होते रहे, तो फिर लेट गेम पे फिर हैना भी श्रेड करती दिखेगी सबको। दिक्कत ये है ना, अब थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। काजा बहुत ज्यादा खुशी रहेंगे यहाँ पे, रिवम काजा की बात करें तो, इसलिए उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। और अभी के लिए जब तक उनके पास आइटमेशन नहीं आएगा, जब तक उनके पास गार्डियन हेलमेट वगैरह ऐसे आइटम नहीं आते, HP आइटम नहीं आते, तब तक वो इतना ज्यादा इन्वेट करके भी नहीं खेल सकते।
कोशिश एक रह सकती है कि जरूर वहां पे जाते हुए दिखेंगे, लेकिन इस समय टैंक के ऊपर प्रहार थोड़ा सा आता हुआ दिखेगा। और ये देखिए वाइसेस सेकंड स्किल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे अल्फा को अंदर भेजा गया है टावर के अंदर, लेकिन अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ आते हुए दिखेंगे। बराट्स कोशिश करेंगे, सेकंड स्किल का इस्तेमाल किया, रोकने का प्रयास, पीछे बैकअप आ चुका है 3 बंदों का यहाँ पे लगातार, और काजा वहां पे मौजूदा है, स्टन देने का प्रयास बिनो रेंज यहाँ पे इस्तेमाल किया है, रिवाइटलाइज इस्तेमाल कर दिया जाएगा, और यहाँ पे अल्टीमेट लगेगा नाना की तरफ से, फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। मिंजे वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, मेज का अल्टीमेट आएगा, पीछे की तरफ से रोकने का प्रयास, इरारा वहां पे मौजूदा है, कॉम्बो का इस्तेमाल, वाइसेस के पास मौका, लेकिन वो बचते हुए निकलेंगे, यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे, और उसी के साथ वाइसेस उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया है, और मौके का फायदा उठाते हुए टर्टल भी सिक्योर कर लिया है। एलाइटी स्पोर्ट्स इस बार वापसी के मूड में लग रही है। एलईडी स्पोर्ट्स ने वहां पे प्रॉपर तरीके से फाइट को संतुलित तरीके से निकाला, एंड द रीजन आई एम हैप्पी फॉर देम इज वो पैनिक नहीं हुए वहां पे। आप देख सकते हैं सॉर्ट लाइक कि वो पूरा डर गए कि हाँ हमसे ज्यादा किल उनके हाथों में लग गई है, और मिड लेनर couldn't manage to take down एरन, तो कोई बात नहीं, वो पूरा काम डाउन रहे, सिचुएशन को संभाला, टर्टल निकाला, सैंडविच किया वहां पर ईशन जिन को, एंड इजी टर्टल ने वहां पर दिया अपनी टीम को। एलईडी स्पोर्ट्स 2-1 के साथ अभी आगे मैक्रो पे भी और माइक्रो पे भी। टॉप लेन पे आप देख सकते हैं जिसकी डर थी वही हो रहा है। Hanabi is finally having the more damage, but what just happened? We can see a slain happen onto Kaizel. One not उनका KDA अल्फा सस्टेन नहीं होता है उतना ज्यादा स्टार्टिंग में। मिड लेन पे यहाँ पे देखिए विक्टर प्रहार करते हुए, टॉप पे इतना ज्यादा कामयाबी नहीं मिली तो सीधा रोटेशन दिया मिड पे, और बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो छीन लिया अभी एलईडी स्पोर्ट्स के हाथों से। मैप एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड भी है, यहाँ पे मिड का टरेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका पूरी 3 लेन में से अर्ली गेम पे, और वहां पे उसको जो है संभल के रहना चाहिए था, उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए टीम S9 मॉरियंस ने मौके का फायदा उठाया, और ये देखिए रिप्ले यहाँ पे आता हुआ जिस तरीके से बहुत ही कम एचपी पे इम्यून होके मारा वहां पे वाइसेस को। माउंटेन चक्कर का इस्तेमाल, भेज आएगी पीछे से, फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। कैनेथ फिर दोबारा से दाराशाही होते हुए जाएंगे। थोड़ा सा मुझे खेलना पड़ेगा मेरे दोस्त, थोड़ी सी आपको ना स्किल थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा कि उनकी स्किल्स वगैरह बेट आउट वगैरह हो जाए तब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा और उसी के साथ कोशिश करने का प्रयास किया था, अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे, डैमेज देने का प्रयास, लेकिन बहुत कम अच्छी पे इरादा बचते हुए आएंगी मिनोटॉर, वो जरूर फिनिश ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे। मछलियों को गुच्छों में पकड़ा था डिवाइन जजमेंट के इस्तेमाल से, लेकिन फॉलो अप थोड़ा सा लेट आया। मिंजे व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउड कंट्रोल वहां पर किया उन्होंने, कमाल का क्राउड कंट्रोल था, लेकिन सैडली एक भी कैजुअलिटीज वहां पर जो है एक्यूमुलेट नहीं कर पाए उनकी टीम। बट नाउ रफिफ्स का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाएंगे यहाँ पे, अब देख सकते हैं काइजल, अच्छा काइजल यहाँ पर EXP नहीं बल्कि मिड खेल रहे हैं, अभी चेंज किया है अपने रोल को, लेकिन लुक एट इट guys, they're right now turning the events on. Bharat with a pick off coming in, पिन किया है वॉल पर पीछे से, यहाँ पर डैमेज आता हुआ विक्टिनी की तरफ से, heaven goes down, so to the trap down onto Minje is retreating back into the safer side, retaliation हो चुका है यहाँ पर, लेकिन पीछे से यहाँ पर क्या हमें किल देखने को मिलेगा? नाना with मोलिना, बट किसी को यहाँ पर मोलिफाइड नहीं कर पाएंगे वो। एक अच्छी सूजी बूजी अटैक यहाँ पर आप देख सकते हैं S9 मॉरियंस की तरफ से, एक किल वहां पर ट्रेड करवाया एंड उसके बदले कुछ भी जो है नहीं दिया उनकी टीम की तरफ, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी आप बोल सकते हैं कंट्रोल इस गेम के ऊपर। बट नाउ अनदर engage coming in, as you can see another pin coming in from the Barats, डैमेज दिया जा रहा है यहाँ पर, उनके साथ बच के निकलने की कोशिश, और बचने की कोशिश में लेजेंड सेंसे को डाउन किया है। लुक एट द डैमेज कमिंग आउट फ्रॉम वॉर गॉड राइट नाउ, वॉर गॉड यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं, टैंक हो सस्टेन हो मैटर नहीं कर रहा है, जिस तरीके से उनकी डैमेज आ रही है, हिकामना यूज हो रहा है, डेफिनेटली कमाल का खेल दिखाते हुए इस मैच पे। बात की जाए मिया की इतना अच्छा खासा मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कम उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लाइक बात की जाए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बहुत गलत जगह फंसे यहाँ पे विक्टर,
उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। उसी के साथ हिरारा वो आ चुकी है। इस बार लग रहा है डैमेज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। किलिंग स्प्री का भी मौका मिला है। उसी के साथ साथ एक और किल मिलेगा और ये देखिए कमाल का डैमेज आता हुआ डबल किल लेते हुए जाएंगी। ओके, एक बढ़िया मैं बोलूंगा कमबैक यहाँ पे आ चुका है एलाइट स्पोर्ट्स। पिछले बार जिस तरीके से पीछे हट रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ पे मैं बोलूंगा प्योर डोमिनेशन अभी आ चुके हैं पूरे मूड पे। पेज की तरफ से कोशिश रहेगी अंदर तरफ गए हैं, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया है, पीछे हटना पड़ेगा, बचेंगे। हिरारा इम्यून होंगे वहां पे स्किल के द्वारा, लेकिन होली शील्ड वो टूट चुका है और मिया इस समय बिल्कुल भी फार्म नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मिनियंस फार्म करने में, उसके अलावा फाइट को भी यहाँ पे लेने में। उसी के साथ साथ एक लीड जो है वो भारी लीड यहाँ पे एलाइट स्पोर्ट्स ने बना ली है। देखेंगे आप यहाँ पे 7K की गोल्ड लीड पे चल रही है इस समय एलाइट स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया एलाइट स्पोर्ट्स डू और डाई गेम और उसपे वापसी करती हुई यहाँ पर अगेंस्ट S9 Mauryans। They don't want to finish it with a 2-0. They want to take it on to the third game decider. विक्टर की मिया वाली चॉइस यहाँ पर बारी पड़ती हुई टीम S9 Mauryans के ऊपर। मिया अच्छा खेला जाता है, लेकिन जब आप अगेंस्ट हैनबी हो तो आपको आउटप्ले करना पड़ेगा। If you don't outplay, then you are kind of cooked. बर्सर्कर फ्यूरी मिया अपनी बिल्ड बनाती हुई, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अगेंस्ट हैनबी, देन मिया इज राइट नाउ तो टर्न ऑफ। उन्हें टर्न ऑन होना पड़ेगा, अगर डैमेज आउटपुट को बढ़ाएंगे नहीं तो फिर गेम फंसेगा नहीं इनटू द हैंड ऑफ S9 Mauryans। 9-3 का ये स्कोर एंड LED Sports is actually cooking the game right now. So let's see if Victor can cook the game as well or will get cooked by the side of team LED Sports. Lord आने वाला है and it's here already. Top lane पे अटैक होगा। Holy Shield is not there in the top lane. There is not a proper kind of sync coming out from the side of team Elite, but still they're gonna look for some more inhibitors so that they will open up the map when the second Lord will attack. और ये देखिए दिखेगा अंदर की तरफ जाते हुए 4 बंदों के बीच में अल्टीमेट का इस्तेमाल, बहुत ही मैची बचेंगे, लेकिन यहाँ पे किलिंग स्प्री लेकर जाएंगे, डबल किल और अल्फा वहां पे आ चुके हैं। कोशिश पूरी, लॉर्ड अभी भी मौजूदा है, पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है। S9 Mauryans उनकी तरफ से आई डोंट थिंक कि यहाँ पे डिफेंड कर पाएंगे क्योंकि कोई बचा ही नहीं है और सीधा बेस के ऊपर प्रहार किया। लॉर्ड को बेस पे आने तक का मौका यहाँ पे नहीं मिला। ओके, आ गए, आखिरी हिट करने आ गए यहाँ पे लॉर्ड और आखिरी हिट करके जाएगा गेम सीधा थर्ड गेम डिसाइडर की तरफ। थोड़ा सा मतलब मौका दो भाई, मैं भी तोड़ देता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथी का ही हूँ। बट क्या सेटअप था मिंजे, आउटपुट लवली सेटअप, लुक एट इट। मतलब जितनी बार देखो उतनी बार कम है। फ्लिकर के साथ आगे बढ़ेंगे डिवाइन जजमेंट में, गुच्छे की तरह पकड़ेंगे वहां पे। देखिए वेट किया, ये गए 3 4 5 और स्पीयर ऑफ अल्फा रफ वेव्स एक साथ टूट पड़ी पूरी टीम। हिगामना वहां पर आया और किलिंग स्प्री, डबल किल, ट्रिपल किल, डबल अबे पूरी तरीके से उन्होंने कमाल कर दिया। 14-3 गाइस, व्हाट अ स्टार, व्हाट अ विन फॉर एलाइट स्पोर्ट्स। थोड़ी सी फेर बदल लाइनअप में, थोड़ा सा फेर बदल ड्राफ्ट में, लेकिन रिजल्ट मिला यहाँ पर टीम none other than एलाइट स्पोर्ट्स टेकिंग द गेम फॉरवर्ड टू द थर्ड गेम डिसाइडर। देखते क्या होता है। पहला हफ्ता मतलब तीसरा हफ्ता 5-5 दिन के स्क्रिम्स का और पहला दिन और पहले दिन में ही दूसरे गेम पे थर्ड गेम डिसाइडर शिंडा। This is what the competitiveness is increasing at Algambo Esports. Competition बढ़ रहा है टीम्स के अंदर। बिल्कुल, वो इम्प्रूवमेंट भी जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ कंपटीशन वो भी जरूर बढ़ता हुआ दिखेगा और अच्छा लगता है देख के कि टीम्स के बीच में ये जो है अच्छी राइवलरी मैं कहूँगा वो बढ़ती हुई दिखती है। टीम्स के बीच में लाइक एक पैशन रहता है कि बेटर परफॉर्म करने का, जरूरी नहीं सामने वाली टीम से लेकिन खुद से बेटर परफॉर्म करने का, वो सबसे ज्यादा मेन रीजन रहता है। क्योंकि कल आप जिस तरीके से थे आज आप उससे बेटर बनेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे जाके जो है जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह आएंगे वहां पे आपका एक तरीके से बोलेंगे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है बिल्ड होते हुए जाता है। कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्ड होता हुआ जाता है। एक तरीके से आप तैयारी करते हुए जा रहे हो यहाँ पे और ऐसा मौका मिलता है आपको यहाँ पे एल्गामो स्पोर्ट्स के बोल सकते हैं यहाँ पे जो वार्मअप क्लैश सीरीज है यानी कि जो स्क्रीम्स है वहां पे
और अगर आपको भी ऐसे ही एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना है, एक ऐसे ही फैमिली का हिस्सा बनना है, तो ज्वाइन करना ना भूले हमको। डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स मिलेंगे सोशल हैंडल्स के, वहाँ पे फॉलो करिए और आगे के फॉलो अप लीजिए। स्क्रिम्स के लिए अपनी टीम को रजिस्टर करिए। आपको चाहे तो यहाँ पे आप पुरानी टीम्स हो, नई टीम्स हो, आप तो फिर आप पहली ऐसी टीम्स हो जो एक्सपीरियंस करना चाहती है कि एक्चुअली वो टूर्नामेंट्स वगैरह किस तरीके से होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट बन सकती है। और बहुत सारी टीम्स हमने एसटीसी खुद देखी है जो यहाँ से स्टार्ट करके गई है और काफी दूसरे टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है और खुद को बेटर बनाती हुई दिख रही है। जी, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो एलईडी स्पोर्ट्स को अपनी मंशा क्लियर करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा और डिफरेंट ड्राफ्ट लाना पड़ेगा। उन्होंने बखूबी खेला है और मिंजे को जाएगा वो क्रेडिट। वो जो पकड़ा वहां पे फ्लिकर अल्ट, दो फ्लिकर अल्ट आज मैंने उनकी तरफ से देखा सेट एंड एक फ्लिकर अल्ट पे तो फॉलो अप इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे में इतना प्रोडक्टिव था, पूरी टीम को ले गए, वाइप आउट कर दिया और पहले ही लॉर्ड पे कंप्लीट किया पूरे गेम को। नो चांस टू कम बैक फॉर द साइड ऑफ टीम S9 मॉरियंस। बट खत्म नहीं हुआ है गेम, यहाँ पर सीरीज खत्म नहीं हुआ है। 1-1 इक्वलाइजर पे है, टाई ब्रेकर स्टार्ट होने वाला है शिंद्रा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि एलईडी स्पोर्ट्स को रोकने के लिए S9 मॉरियंस अभी कुछ ना कुछ सोच तो रख रही होगी अपने दिमाग में। ऐसे ही कुछ अपडेट आया है, एक बार प्लीज आप रीड कर दीजिए प्लीज। अच्छा, हम एलईडी स्पोर्ट्स फॉरफिट कर ली है अभी S9 मॉरियन विनर्स यहाँ पर माने जाते हैं, और एलईडी स्पोर्ट्स की इस हरकत की वजह से जो है उन्हें 2 हफ्ते के लिए बैन किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आप स्क्रिम्स खेल रहे हो बट इट इज एक्चुअली रियल स्पोर्टिव स्पिरिट रहनी चाहिए आपकी तरफ से। आई नो आपके कुछ काम होते आ जाते हैं, लेकिन यू कांट एक्सक्यूज इट इन द रियल गेम्स, बट कोई बात नहीं। आई होप कि मतलब उन्हें समझ आए, डिसिप्लिन का समझ आए, सब एथिक्स का। बाकी तो ई स्पोर्ट्स बाद में खेलेंगे, पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा एलईडी स्पोर्ट्स, बट कोई बात नहीं। द विनर्स आर मौरियन रॉयल्स, फोरफिट किया यहाँ पर एलईडी स्पोर्ट्स, जिसके कारण एक 3 पॉइंट मिला मौरियन रॉयल्स को, एंड देयर यू गो गाइस, नॉट अ 2-0 बट अ 2-1। एंड विद दिस मैं और शिंद्रा लेते एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं तुरंत फॉर द थर्ड गेम, जो हम नहीं होंगे, कुछ नए कास्टर्स जुड़ेंगे, बट आप लोग कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए एट मोबा वार्मअप क्लास सीरीज पावर्ड बाय Algambo Esports। स्टे ट्यून गाइस।
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back once again to MOBA Warmup Clash Series. We just had 2 matches back-to-back, a BO3. Unfortunately, the last match was a forfeiture, but now we'll move on towards the final and the third game of the night. It's going to be between Team ARX Esports versus Team Mavericks, and we're just going to be getting started with it. But of course, let me first introduce my co-caster that's going to be joining my brother Itami, and of course, myself, Ray. Hello, Itami, how are you doing? I'm doing great, man. I kinda, just noticed something that you and me have the same stance, apparently, onto the desk. It's mirrored, identical. Yep. The only difference is, okay, I'm a bit more onto the skinny side, but never mind onto that. And ARX You're not will be skinny. having. My head is just the size of a coconut. I'm sorry. No, watermelon. Coconut can be smaller. Watermelon. I don't know. It's a birth defect or something. My head is just massive. You know that cartoon show? Was it called Hagemaru or something? Yeah, my head is shaped like that. Okay, bro. Self-destruction, I guess. But leaving everything aside, ARX has the first big advantage for the side, and I believe most probably they are still going to go out with their regular picks, and Team Mavericks as well. They still have the counter pick advantage for their side. So, the recent patch adjustment was the Kaja getting revamped. So I guess the Kaja is still available for either of the teams. So they will be trying to prioritize out that Kaja in order to just ban it out or to pick it out or something like that. And ARX, previously I did casted some of the games as well. They were kind of inconsistent, but still they were able to pull up some fight. So against Team Mavericks, I believe they will be standing quite of a chance if they actually execute the draft well. And it's not just onto the draft as well. The rotations and the results of the scrims will be showing up onto this match as well. I agree with you on that, Itami. Especially these 2 teams. Both of them competed in our recent tournament, which was Clash for Starlight. The last week, I believe Mavericks lost the game against Mauryans Royals, which is literally the team that fought before this game. And it happened for a reason. It was a full-on epic comeback by Mauryans Royals by Victor's Claude. So Mavericks was pretty close, but yeah, still far away from getting that, at least the semi-final brackets. So now they're back again once more at our MOBA Warmup Clash Scrim series, where we host weekly scrims. Now we're at number 41, week 34, I believe. We are such a long way in, wow. 41 scrims hosted for the teams. And now we'll move on finally with the drafting. There we go. The Hirata, she's gonna get banned out immediately. No doubts there. But Mavericks, are your bans going to change after the tournament because you've had time to, see other people's draft now? And maybe they have done their homework, because we don't actually often see the Uranus getting banned out quite earlier on, especially as the first ban. So it could be one of the scenarios that ARX likes to prioritize out the Uranus onto the EXP, which is completely justified, to be honest, because Uranus has a lot of sustain, and once he gets his defense items as well as his core items, then not only he will be able to sustain, but create a lot of havoc for the side of the opponent's team. So yeah, that is a complete understandable ban. And Paquito as well as the Herrera, I think I don't have to be analyzing much onto this, because these 2 have been quite overpowered onto this, especially the Paquito. Not because he's a monster onto the EXP lane, but he can be played out onto the jungle as well as onto the gold. So a complete flex with a heavy kind of a burst damage kind of a hero. Yeah, I mean, especially when you consider the fact that carry has been out of the meta, so Uranus is just reigning free, since we don't have exactly, the true damage hero. I mean, we have the Berserker's Fury, which is a good crit scaling item, but since it takes a while to build it, Uranus can reign free. And then getting back to the point, Hirara and Paquito, especially Paquito, needs no introduction. I wonder why he's so strong. It's not like there's a Street Fighter skin or anything, but with this, we are going to be getting the first pick. There are a lot of heroes open, and especially I believe the Atlas and the Belric being open will immediately get prioritized here. ARX will most likely pick the Atlas, but
let me just tell you, Itami, if they pick up Atlas, the other side, they will pick the other tank, and then they'll play the Valentina. So they can get double the ultimate. Yeah, that's the thing, and they got the Atlas instead, and so Yeah, watch Belric. Mavericks can, Belric and Valentina as well could be coming up, but I believe like the Valentina is the perfect counter, or let's say the perfect answer because of the copying of the Fatal Links. She might not be able to sustain quite up much, but the thing is, once the Fatal Links actually lands up, then that will be creating the engagement for the side of the team. And there you go, the Valentina was definitely quite confirmed, and it follows up with the Beleric as well. So by far the draft, it looks out onto the precision for both of the sides, and ARX will be proceeding out with most probably the jungler, which is still open, as well as the EXP team. So the other roles, excluding the roam, is still available, and there are a lot of meta priority heroes which could be locked on onto for this team as well. Yeah, and ARX already has kind of like lost Still how to draft. I'm gonna be honest, because giving away such strong mid control, Itami, like let me just tell you, Belric is just full on nuisance, man. Holy hell, like. Play any hero that has basic attack, or no, don't even play any hero that doesn't have basic attack. The constant taunting and the feedback that you get from his passive, the thorns, it's just unbearable, man. I mean, he always used to be this annoying tank, but I guess that's the thing, man. The carry falling out of the meta really made the tank shine up higher, and combined with the fact that we no longer have the Fredrin or the Boxshares dominating the meta anymore. It's the assassin meta, and the assassins get really hard countered by tanky tanks. So we are right now in this meta for now, and Belric and Atlas dominated. And another one is of course the new addition into the XP in the Barats. It's been really funny, by the way. I believe in a single year we've went from Yuzhong to Freya to Uranus to Barats to Pakito. Like EXP has seen the most amount of flexibility this year. Meanwhile, jungle has been like tank assassin. When will you get mage jungle back, bro? I miss my Nathan and Harid jungle. Marksman jungle as well, like the Granger jungle as well as the Bruno jungle, followed by the Claude jungle too. But speaking of everything, I would like to talk about the Barats as well, because of the engagement as well as the nom flicker combination of his. He can make up the engagement for the side of his team. So Barats has been quite of a priority, and I think the item adjustments has also quite of a role to play onto it. But the Melissa and the Hanabi, I think, like if you actually know how to deal out with her, I think Hanabi is bearable. But the problem with the Hanabi is, no matter how many times she is taken down, if she is able to split push, then that is going to be putting up a lot of nuisance for the side of the opponent. So Hanabi would be banned out as well, and Esme has been banned out as well from the side of the Mavericks. And okay, a Gatot Kacha EXP is something we don't see quite often. Could be the Belric EXP too. Yeah, could be the Belric EXP too. They can decide. Belric EXP is better. You get Belric in higher level. Gatot getting higher level doesn't really matter much. So ARX had to pull out the carry, seeing such hefty frontliners. I mean, at this point you have to. Zayton doesn't have enough damage. Ling doesn't have enough damage. The tanks will literally be unkillable. So it's just bad. Oh wow, Mavericks. God. What the heck? They're pulling out the Mincy Golden Lane. To be fair, I like the Mincy Golden Lane, considering you do have the YSS. You're not going to be lacking from the late game. And Mincy is... He 100% counters the carry, let's be real. Carry has no range. Being a Ling, I believe like the one hero that you would actually hate going up against is a Mencitar. And a Mencitar comes up onto here, and this is going to be quite of a game if the Menci as well is able to keep up with the gold lead compared to the carry. So he will be able to get those core items as soon as possible, so the damage will be done as well, and especially onto the turtle fights. If it is favorable for the EXP, the Beleric is definitely going to be rotating, and the Mencitar can also just go and use the flicker combination with the King's Calling. So really problematic situation, but this is going to be the final game for the night. ARX going up against Team Maverick onto the BO3 series. Myself, I am Mitami, and Ray will be joining with the play-by-play. And okay, is that Kyowe?
onto the Ling. All right, we're stepping into the game, and it's gonna be the mirror rotation. One goes for the purple while the other goes for the red. I mean, it's a Link, goddammit. He's gonna be going for the purple anyways. Without it, he's basically just call him paralyzed at that point. And with this, both of the junglers, they have good skill, good farming speed, and both of them have crowd control immunity. Although I would say the YSS has better window due to the fact that his first skill can constantly reset as long as he keeps on fighting. And with this, we'll dive into the match. The Mincetar Golin should win against the carry once he's level 4, but until then he has to play a slight bit of safe, or he can just decide to play aggro as well, because carry doesn't have enough damage in the early game. We are seeing a bit of new names, or maybe their IGNs changed. Kioe and Samuel Seo, I did not see them last time. Maybe they changed names, I don't know, but whatever it may be, right now the turtle is still half a minute away. Yeah, and the YSS is already onto the level 4 mark, so the Mountain Shocker as well as the engagements could be done. The hook completely misses out onto the mid, but still there might be engagements before that, before the turtle actually. The Ling is already getting poked down. There's the taunt, Tempest Blades comes up and he won't be able to retreat, just goes down. First blood for the side of Team Mavericks, and they will be deciding to disengage. Quite of a trade, the jungler is already down. I was not expecting that. I honestly thought Yuzhong would be the victim because, you know, Yuzhong before level 4, he doesn't have any escape skill, right? We just bait out his dash. After that, he's just a sitting duck. I mean, he can try to fight you back, but considering they have a lot of stun, I honestly thought they might be able to get it, but it looks like that's not going to be the case. Right now, Prajwal, he's getting a bit taunted. He does want to use up the Black Dragon. Might be getting something, maybe not. Okay, AOG popping in as well, but Mr. Consistent still going to be getting the turtle. Still fighting in. Prajwal gets taken down by Cursed Soul. There's going to be Wrath of Riot popping in. Zetian getting caught out as well. Double kill for Cursed Soul. Can it be a triple? No, it's going to be Coconut Water taking the kill. And with this, 0-2-4. Mavericks leading the game already, and now they just want the gold shield, or might even be able to take the turret, considering there's so many people. Ling just wants to clear out the minions. Might be able to do it with the Tempest of Blades, but you're getting taunted. You gotta watch out. That was close, man. That was close. Almost able to take the tower as well, but he trades it out with the Templates of Blades and almost onto the cost of his life as well. He has the purple, but still a win situation for the side of Team Mavericks, considering that was a 3 for none and the turtle going out for the side. So the lead is simply just extending out, and the fact that when it comes out onto the team fight engagement, Team Mavericks would definitely stand a better chance because they do have the scalings. They don't have the core items yet, but the problem is like the main that's the combination as well as the hook completely land on to point. Ying's calling comes up and gets the trade onto Samuel. He just goes down onto that, and that flicker is definitely worth it. Mincetar will be going back though, and yeah, he does has the goal lead and he will be trying to maintain it out, but ARX are yet to find out a proper opening. Yep. I don't think it's going to be happening either. They're late game scaling. They're like, I mean, let's be real. Their scaling is really bad. I mean, that's the most appropriate way I can put it out. Zetian, she's more of a support mage. Let's be real. She can dish out the damage, but her main gig is providing the vision, the crowd control, and the movement speed. She is not someone you'd look up to as damage dealer. Ling, he's someone that can get damage in the late game, but he is an assassin. His job is to capture the kills. Ling will secure the purple regardless of that. Mounted Chucker coming in. Atlas, he's just getting melted. Did not even get a chance to. Consistent gets the Sky Piercer as well. Carry on the top side. Good ultimate by Zetian, but it's not gonna do much because there's just nobody to follow up. This whole lineup of ARX Esports, it stands on a very, like a fragile toothpick, I would say, which is the carry. She's their sole damage dealer, and she's the most vulnerable. Look at that. Who's gonna save her? She can't retreat. She's cooked. There's the complete dive as well onto Samuel. Nothing he could actually do about it right now, and it might be just the trade onto the tower as well. So,
speaking of trades as well as the engagements, there's a fight onto the mid. Fly just goes down onto the process. Black Dragon form comes up from Prajwal, but the damage scaling from the side of Team Mavericks is going to be too high. Prajwal just goes down. Shreyans might be the next one onto the chopping block. Yep, that is going to be the double for the YSS. And just like that, they are just going to be losing out the members and ARX onto the trade of just one. The Valentina as well as the Kings calling a solo kill onto the carry once again, making sure he won't be getting any scaling, any farm, and the difference is just leveling up at this point, Ray. Yep, they can't do anything about it. It's just over for them. I don't think ARX can even come back, because like, how can you? Especially considering right now the meta that we're in, it's very unforgiving, you know? When you get the early game, you snowball, you 99% are going to be winning it out. But that could be a mistake, or is it? That's going to be the Kacha popping in with the ultimate, Wrath of the Dread popping in as well. A lot of damage being dished out, but G-Rage is still going to be able to get the kill. That's going to be Cursol getting taken down, a shutdown finally secured. ARX Esports finally getting something at least out of it. One shutdown for them, but that was the roamer. And with this, the last turtle will be coming in 20 seconds. ARX right now behind 5,000 gold. Roamer for a roamer trade actually, and it's the scaling is just showing up from the side of Team Mavericks, and the fact that they almost have over 6k goal lead is the problem. And looking at the replay, that was a complete dive onto the carry. Nothing he could actually do about it. But look at the mini cam. There is some fight going around, and they have decided to disengage as well. But this is going to be another uncontested turtle for the side of Team Mavericks. The scaling is there, and that is going to be another turtle. Mountain Shocker comes up from the YSS, and there might be the engagement onto the Atlas, but Samuel will be the one taken down, and that is just going to be a double. The Sky Piercer stacks is stacking up, and it might be a triple as well for him. He gets the triple. King's Calling comes up. That was actually baited out, but still a 3 for none, as well as the turtle goes out for the side of Team Mavericks once again. And ARX Esports, they are not onto a very comfortable spot right now. They will just be losing out the tiers as well. And Kiowe, I think he will be trying to at least get some farm onto here. Doesn't has the blue and won't be able to get it. So that is going to be more problematic, honestly. It's really hard to figure out like what can ARX Esports honestly do. They have the Atlas, they thought they had the priority, but the fact that the Belric and the Valentina are just creating so much impact. Look at that. Belric, it does not even let Atlas retreat, and that is just enough for the YSS to be farming up. And once YSS gets snowball, let's be real, he's one of the most annoying and hardest heroes to kill due to his constant spam of crowd control immunity and his repositioning skills. And the fact that he also gets vision, you're not going to be able to ambush him that easily compared to what you could have done if it was another hero. And with this, look at Mincy alone dishing out so much damage. Tempest of Blades has to force away Prajwal coming towards the top side. Can he do something? Oh, Atlas gonna be getting a set. Finally, maybe this Atian might be able to do something about it. Fury of the Phoenix, not enough. Double kill secure, triple. Make it a Maniac. Might go for a Savage. He's chasing the Ling, but the Ling will get on top of the wall. And, oh, okay. Yeah, enough energy. He'll retreat. It's fine. But yeah, that's the thing. That was an amazing set. ARX, great coordination on site. But that's the thing. You're behind in farm. You can't do anything about it. And with that, they're going to be cracking up the inhibitor down and just take the Lord too. Yep, and the thing is, like, if they actually equalized onto the farm, then maybe the consequences would have been different for the side of Team ARX. That was really good engagement onto an ally, but the problem was, even if Prajwal went in with the Black Dragon form and the resources was already baited out, the damage was still not enough coming up, and that is going to be the Lord again. Onto the mini cam, there is still some fight going around. Legendary for the YSS, and it is going to be Cursol able to get the kill onto the carry. And they might be trying to dive in onto Prajwal as well. He is trying to best to at least buy some time for the side of his team, but there will be the taunts coming up. Fury of the Phoenix also comes up, but how long will Prajwal be able to survive? Will he just go back? Yeah, he will be trying to go back, at least from here. But the problem is, from the mid side, the Lord is already marching up, and it does look like an end for the side of Team Mavericks until and unless Team ARX Esports actually come up with the defense onto here.
Yeah, and with this 20-2, a massive 11,000 goal lead. How can you defend? Is there any chance of defending? I don't think so. It's just gonna be a full-on massacre as the base is exposed, laid out. But this is where people can make mistakes. Carry is finally dishing out some amount of damage. Legendary secured for Mr. Consistent. He takes down QA. Might go for a triple. Make it another. No, it was not a maniac. No. Unfortunate. Consistent instead gets taken down. Well, that's a teammate thing for you. But with this 25-4, Mavericks gains a staggering first victory in this best of 3 scrims for the night. Yep, the first victory as well as the match point for the side of Team Mavericks. So they will be trying to get one more point onto here. But looking at the defense, I would say, the replay. Look at the Beleric. Wrath of the Riot just comes up as well as a taunt onto the carry as well as onto the link. So he did make sure the carry as well as the link would not be able to join up the team fight onto time. They were not able to do so. And the thing is, Mr. Consistent was way too farmed, and it was just a matter of time that Team ARX lost out most of their members, and Consistent is going to be the MVP as well for the side of the team. So 15 I would- kills. yeah, 15 kills onto a YSS, and I think he already had 80 stacks onto the Sky PSL as well. And if the Ling had already baited out most of his resources, then could have been a savage as well. But still, it is fine. You still got the victory for the side of your team, so you will be trying to make sure you keep up that momentum onto the second game as well. Yep. And with this, now we just look forward to the second game and wait for the teams to be joining us pretty soon and to give us something new for the next time, right? Because I think ARX, they've been, I don't know, is this like new members or like the same? I don't know, because I don't follow them, but are they having new members and tryouts? I think for ARX, one of the most familiar faces for me was Prajwal, the EXP laner, because he uses out the heroes like the Sora as well as the Yuzhong mostly. So whenever I actually cast for ARX Esports, he is the one actually standing out for the team as well. So it could be the other members too, but mostly the highlighted person would be Prajwal as well as the other members too. So the jungler as well. QOA, if he was able to at least get the blue, and if his team was able to, equalize onto the farm, then maybe Team Mavericks would have been standing up with quite of a competition. But this time, the first game was completely one-sided for their side. So Team Mavericks will be trying to make sure that they will be able to keep up with that momentum. And the second match is going to be the decider for them. Will Team ARX actually come up with 1 point and maybe a potential reverse sweep, or will it be a complete clean sweep for the side of Team Mavericks? Yep, and I believe we will take a short little break and we'll be right back with game number 2, I believe. Or wait, we were waiting for a team. Yeah, not sure why the teams were taking so long. I was a bit confused on my end. But yeah, we'll just wait for the teams for a while, I guess. Do we take a break or not, production? What do you say? Okay, no breaks, then we'll wait out for Prajwal to be coming in. Not sure why. They are online, but they're not joining us. No, it's fine. Anyways, Dami, how are you doing? I'm doing fine, thank you. I was supposed to go to watch movie, but okay, it's Which cancelled. movie? And Brand New Day, actually, I was not able to, watch it back then. And right now I'm in Gantok, so I thought I would be catching up for the movie as well. But due to some unfortunate circumstances, we were not able to do it. And I will just be watching the hall printed one, I guess, onto the laptop soon. So it is what it is, guys. Even if we are taking a break, guys. We will be back before that. So make sure, if you have just joined onto the stream, make sure you like, share,
and be active onto the live chat. So we'll be back in a short break. Ladies and gentlemen, welcome back. Unfortunately, with a heavy heart, we have to announce the fact that Team ARX will be forfeiting the match due to some unseen circumstances. Whatever the circumstance will be, we have to follow the rules, obviously, to respect the fact that Mavericks showed up and they were waiting for the second game. So, with following the rules, Team ARX Esports will be banned due for 2 weeks, but then they can join us again, just to make sure they're penalized for this, I guess, mistake on their end. But with whatever situation may be, we're wishing them the best, and hopefully they join us back, and I definitely think they will, and you can too as well, by making sure you join our Discord server. The registrations are open every day for our weekly scrims. We can honestly call it daily scrims by now, because we host them daily for you during the week, on the weekdays, and most teams are done, but you can register for the day after
on our Discord server at Algambo Esports. The links will be on description. So with that, ladies and gentlemen, we will see you tomorrow at the same time at 6 p.m. o'clock at YouTube channel. Make sure you subscribe if you haven't, and we'll see you tomorrow. Good night, take care, and make sure you visit us again.